अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके के माध्यम से। दिन रात्रि का मुकाबला, दूसरा मुकाबला। अगर आज पहले मुकाबले की बात करें और उसके बाद ये दूसरा मुकाबला, तो कुल मिलाकर जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास 2022 सेकंड एडिशन और नौवां मुकाबला। एक तरफ द रियल सुल्तान समरबुग और दूसरी तरफ हिलव्यू राजौरी। हिलव्यू राजौरी दो मुकाबले खेले हैं, एक में जीत एक में हार। वहीं पे सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की अगर हम बात करें, वो पहला मुकाबला, एकमात्र मुकाबला उन्होंने खेला है और उसमें संभवतः हार का सामना करना पड़ा था। और अब जाकर के यहाँ एक चुनौती देना चाहेंगे, एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और अगर सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की बात करें, उनमें दम कम है, प्लेइंग 11 का बहुत ही बेहतरीन है, मजबूत किया आपने प्लेइंग 11 को और एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक बेहतर शुरुआत की आवश्यकता यहाँ पे। एक कड़ा मुकाबला, दोनों टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल रही हैं। तीसरा मुकाबला हिलव्यू राजौरी का, क्षमा कीजिएगा क्योंकि दो मुकाबले इससे पूर्व वो खेल चुके हैं, एक में जीत एक में हार। तीसरा मुकाबला हिलव्यू राजौरी का और रियल सुल्तान समरबुग का ये दूसरा मुकाबला। तो यहाँ हिलव्यू राजौरी पहले बल्लेबाजी करेगी, दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में और गेंदबाजी का दायित्व उमर आलम के पास, एक अनुभवी खिलाड़ी जो शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में द रियल सुल्तान समरबुग के लिए। सूर्यांश रैना और राम दयाल, ये है प्रारंभिक छोड़ी हिलव्यू राजौरी की ओर से और उमर आलम करेंगे शुरुआत गेंदबाजी में। पहले 6 ओवर काफी महत्वपूर्ण, दूसरा मैच प्रारंभ होने जा रहा है, दिन रात्रि का यह मुकाबला और ऐसे में एक चुनौती जरूर होगी हिलव्यू राजौरी के सामने गेंदबाजों द्वारा। उमर आलम की बात करें, अच्छी खासी क्षमता उनके पास, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हैं, पर यहाँ उस अनुभव को प्रयोग में लाना होगा, उस अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, इस मैच में अपना दायित्व निभाना होगा उमर आलम को, जो कि शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाजी में। तो चलिए लेट्स प्ले का निर्णय और मैच की पहली पारी की पहली गेंद हिलव्यू राजौरी के लिए। उमर आलम पहली गेंद, और पहली गेंद पर थोड़ा क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर, अच्छा स्ट्रोक खेला सूर्यांश रैना ने। और पिछले मुकाबले की तेज तरार शुरुआत और यहाँ पर इसी प्रकार की शुरुआत भी चाहिए। तो पहला रन यहाँ पर मिलता हुआ हिलव्यू राजौरी को, एक बगैर नुकसान के राम दयाल, एक और अनुभवी खिलाड़ी, और पिछले मुकाबले में तेज तरार शुरुआत दी थी सूर्यांश रैना के साथ। सूर्यांश रैना ने भी कुछ आक्रामक तेवर दिखाए जरूर थे और एक अटैकिंग क्रिकेट शुरुआत से ही खेलने का प्रयास किया था, और वो शुरुआत यहाँ पर भी कोशिश जरूर हो गई। उमर आलम भारी भरकम शरीर के मालिक पर एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। यहाँ देखना होगा किस प्रकार से वो शुरुआत देंगे, राम दयाल को किस प्रकार से चुनौती देंगे, और कुछ प्रश्न जरूर पूछेंगे राम दयाल को उमर आलम, एक बगैर नुकसान के। अच्छी गेंद थी राम दयाल के लिए और उन्होंने ऑन साइड में उस गेंद को खेला, एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े। और जानते हैं कि शुरुआती ओवर से कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है राम दयाल और सूर्यांश रैना को। दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोल लिया। इस समय रन संख्या हिलव्यू राजौरी की 2 बगैर नुकसान के। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर। मुनव्वर, स्वागत है आपका। Assalamu alaikum. Thank you, Nazir. One with applause. We are in over number 1. It's a cool evening here at Bakshi Stadium. Lights are on, floodlights pressed into service for match 2 for today. Umar Alam, the experienced lad. There is a shot for LBW. Turned down. Clearly going above the knee roll. Hits him around that thigh pad area. No problem at all. Little attendance for match 2. It was flooded earlier on this afternoon till evening. The late evening, 2 without loss. Umar Alam in his first over, trying to be effective. He has to be proactive and more effective. Punchy, dry there. And Suryansh other day, that was brilliant innings. And not very shown that composure. He was well composed. And that knock, that set the tone for the big chase, and later on they won the game. They were chasing 191. And that was an excellent chase as far as Hill Rajouri is concerned. In the meantime, Umar Alam, that's a beauty from Alam, who draws Suryansh forward, lures him into that drive,
but his beaten all ends up. A bowler gets a psychological boost when he beats the batter like this, draws him forward, then beats him. A sight you would love to be part of that and take a look. This is their dugout. Hillview, it's one victory, one loss. They lost one, they win one. They do have that something to carry on as of now. Again, there is outward moment. Yes, not a clean stop, so no problem at all. It's 3-4 none after the completion of over number 1. In the very first over, we saw that Suryansh giving himself charge and Umar telling him, "Hey, I have played a lot of cricket. Don't you know my name?" It was just like that going on. And there was a customary handshake at the end telling him that, "I know you are the experienced lad. Thank you very much, brother. You're the big brother. Carry on and continue. Don't worry. I know I respect you." And it's 3 for none after the completion of over number 1. There is a slip in place. Captain is going to be there. This is the real Sultan Sumerbugh taking on Hillview Rajouri. Record is as of now okay. It is fine as of now. The captain has given an opportunity to Sajidar. He's a fine bowler when it comes to the skills, and he's got those skills of hitting the ball at the fag end. But right now he's got the ball in his hand. What will he do now? On-drive comes into play, and Suryansh looks busy at the moment. He's going to be a busy customer as he's on a mission. He's sent for something special at the top of the order, and to some extent he's living up to his expectations. He has realized that I am given an opportunity. Now he need to cash on. We have seen that in this tournament, different teams going with the different pairs. We have seen today Royal Goodwill going with Ishtiaq Rasool and Yesh Garg. Now they're going to try in the remaining games. They have to find the one pair that's going to fit the remaining games. They're going to go with the same pair. It's 4 without loss up to 1.1. The second over. Just the second over for today. It's a steady start. Ramdayal. There is a slip in for Ramdayal, and Ramdayal is experienced. He has played domestic cricket and is at the top of the order for Hillview Rajouri. JK Super Seamen Red Premier League Season 2 presented by Athwas. This time round we are here at Bakshi Stadium. Flicked away. Is he Fazil Rashid keeping stumpers? Can we have the front on vision, please? We would confirm, and we would love to confirm it. Looks like it is Fazil Rashid who's keeping stumpers. Now this lad is also going through good days. We saw that 100 coming in Pulwama few days back. Suryansh may be in danger. He is in danger. He's gone. He's a goner. He's caught in mid-off, and Tajamul Baba. Good catch. Nicely taken that one. A catch that will be remembered, and all the boys are there surrounding, and he's being surrounded by his teammates. Tajamul Baba, pat on the back. Oh, his bat rolled in his hand earlier on. Oh, take a look again. Good catch with Tajamul Baba. Intent shown, presence of mind. Comes forward, leans a little bit, then knelt down on knee. Good catch in the end, a good one. Because it isn't easy for a boy like, a person like, namely Tajamul Baba. It isn't easy to bend his knees or the back, because he's a tall, lanky lad. He does well on that occasion. A good goal, nice catch. 5 for 1. Umar Alam is going to be the happiest man on the field. The captain, the skipper,
So is going to be Sajadar, who removed one of the batters, Suryansh, who played that pivotal part of the day in the victory, and today is gone without doing any damage, without bothering scorers here. And even look at this real Sultan Sumerbugh side. They felt that sigh of relief for a while as they removed one of the talented lads. Anuj Kumar is in at number 3. These days are going to be special for all of us, and we're going to remember these days. The experience we're gaining with every passing day is something special, and inshallah we're going to carry this experience in days to come, in years to come, inshallah. That's a punch, but find a fielder in place, not for runs. As this is the second over of the game, Sajid, who's bowling at the moment, in his very first over, he has his tails up at the moment. When you pick up a wicket, when you're among the wickets straight away in a very first over, you feel that I can do, showing that ability. Or this one wraps him on pad outside the line of leg. Well, this is another important thing these fielders need to understand. He fired in, and it was Sajjad Sultan who sacrificed his body for a while and saved that one. Otherwise it would have been overthrows, would have been 5 gifted runs. Sometimes there is no need to get overcautious. You have to be cautious on the field. Needless shy. And you know who was at stake? It's a Sajjad Sultan. He's a game changer. He's a match winner. And when you hit like this, you can hurt him. The way we saw earlier on this evening, there was a moment where Salman got hit. And Salman, he was injured for a while. 6 for 1 as we are going to be in over number 3. Captain will carry on and continue from Southern Pavilion end. Sajid bowled that terrific over. The tight one, just 3 from it. It's 3 apiece from 2 overs. 6 overall for the last one. Umar Alam. Back for the second over. Apish. And a drop short of Yashjeet there. Anything further, Ariel? He would have loved to say, yes, I'm here. Well, it's 6 for the last one. This is third over we are in JK Super Cement Red Premier League Season 2 presented by Athwas here at Bakshi Stadium. Third over, 6 for the loss of a wicket. Umar Alam continues to operate, and that one is lucky. And Anuj Kumar, look, gaze at Anuj Kumar from Umar Alam. You know that Umar Alam, he's a different character on the field when it comes to that brings in that lot of energy. He's steaming in at times. He's trying to up the tempo. And this lad, look at the gaze at the batter, and Anuj just trying to hide a bit. Know that sometimes he's in a mood of cracking jokes, and sometimes he can be harsh. Oh, come on, what are you doing? Just hit me. He's going to tell these things. And these things, you know that there is going to be another important aspect that is called the psychological advantage. Sometimes he's trying to distract you. It stays low. Now the ball is keeping low. That's another problem with the surface. Looks like there is going to be low bounce on offer. There is going to be little bounce on offer. Six for the last one as we are in over number 3. Halfway mark in third over. 6 for the loss of 1. Third over we are in the meantime. Umar Alam continues to operate. The experience, legendary lad from Heart of Steel is leading the real Sultan Sumerbugh side. Oh, that is a charge from batter. Half stop. This is what you require. This is what you need in the power play. If you can't hit the ball in the power play, then where you can hit the ball? How you can find the gap? You have to do it. You can go aerial. Just 2 men outside the ring or the 30-yard circle. You have to find the boundaries here. Right now you can find the boundaries at will, but later on it won't be easy. On the other side, bowling unit is doing really well.
They're keeping batters under check. Caged. It's a cagey passage of game. They're caged, the two batters. It's 8 for 1 in over number 3. Another tight over continues from skipper, the captain. And this is an exemplary work he's doing at the moment for his team. He's setting an example for others to come in and chip in with the tight overs, telling them directly or indirectly, look, if I can cope up with the batters, you have that ability more than me. I'm a grown up, I'm getting old. I don't have that much energy and pace left, but you do have those fiery ones in your arms. 8 for 1. That one, he's a bit lucky to survive. Not what he intended. He was waiting for that pacey one. It's 3 gone. 8 for 1. Hillview Rajouri batting first against the likes of the real Sultan Sumerbugh. 2 tight overs from Umar Alam. 2 overs, none for 5. He's pretty happy. Walks away. 2 tight overs and batting unit. They need to fire on all cylinders now. There is no other option left. The other important thing is what remains to be seen from the batting unit, what they can do and how the bowlers will continue with the same pace. Are they going to show that zest and zeal to keep batters on their toes and make them toil hard for each and every single through the line? That's the good way to go with a straight bat, but the ball is deviating a little bit and it's keeping low. Decided to bat first. Will it slow up further in the second innings? Is it going to be more slower in the second innings? That remains to be seen. We'll have to wait and watch. It will be early to say because these pitches we have seen that it used to change up a bit. Just not just a bit, but we have seen that drastic change. Oh, but that is a gorgeous flick shot. Flick of the wrist. It's from the Al for you. Much needed boundary. Breaking shackles. 4 more. चौका मिला यहाँ रामदयाल को साजिद डार के विरुद्ध. खूबसूरत कलाइयों के दम पर ये फ्लिक शॉट चौका. 4 और खाते में हिलव्यू राजौरी 12 तक पहुंच चुकी है. 1 विकेट पे 3.2 ओवर की गेंदबाजी में. चौथा ओवर पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले में थोड़ा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करने का प्रयास हो रहा है. अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है क्योंकि 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर और इस पावर प्ले का लाभ लेना चाह रही है इस समय टीम हिलव्यू राजौरी. रामदयाल सामने लीजिए. स्ट्रोक तेज था पर सीधे हाथ में और कहानी का दी एंड लिख दिया यहां पर साजिद डार ने. रामदयाल की पारी हो गई समाप्त. 6 पर आए, 6 गेंदों का सामना किया, 12 पे दूसरा विकेट और दोनों सफलताएं साजिद डार के खाते में. आसान रहता नहीं है इतना जल्दी रिएक्ट करना और कैच लपक लेना. हालांकि तेज स्ट्रोक था पर कॉटन बोल्ट का ये मौका और उस मौके को जाने नहीं दिया यहाँ साजिद डार ने. खूबसूरत और शानदार कैच लपका. जी हाँ, बिल्कुल चेक किया जाएगा. क्या वहां पे दिक्कत तो नहीं? हालांकि अभी भी चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर द्वारा. और यहाँ कहानी थोड़ी सी गंभीर क्योंकि दूसरा विकेट गंवाया है यहाँ हिलव्यू राजौरी ने. यदि नो बॉल को चेक किया जा रहा है और देखना होगा वो बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनता है द रियल सुल्तान समरबुग की. अगर हम बात करें संभवतः अभी भी निर्णय आना बाकी. जी हाँ, आउट करार दिए गए और इस प्रकार से वापस लौटना पड़ेगा. ये दूसरा विकेट गंवाया है और एक और विकेट. और यहाँ देख लीजिए रिप्लेस के माध्यम से साजिद डार विकेट मिलता हुआ. और तेज स्ट्रोक जरूर था. ये देख लीजिए इतना जल्दी और रिएक्ट करना और एकदम से गेंद हाथ में झपक लेना मैं समझता हूँ एक आसान रहने वाला नहीं है. रहता भी नहीं है क्योंकि इन परिस्थिति में इतना तेज स्ट्रोक एकदम क्योंकि गेंदबाज उस पोजीशन में नहीं होते हैं. अब गेंदबाजी करने के बाद जो है आपका सरकार जो है
वो पुश जो है सामने की ओर होता है और ऐसे में रिएक्ट करके गेंद को लपक लेना। और मुस्कान ज़रूर वहाँ रामदयाल के चेहरे पर ये मुस्कान अब समाप्त होती हुई। अनुज कुमार 2 पे, 12 पे 2, 3.3। द रियल सुल्तान समरबुक की अच्छी शुरुआत गेंदबाजी द्वारा और दोनों विकेट साजिद डार के खाते में। बेहतरीन गेंदबाजी की है 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन खर्चे हैं और 2 विकेट प्राप्त किए हैं। उमर आलम ने दूसरे छोर से 2 ओवर में मात्र 5 रन, उन्हें विकेट नहीं मिला है पर अनुशासन दिखा, वो पैनापन, कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने की है दूसरे छोर से। ऋषंत कोहली नए बल्लेबाज, आज उनका चयन हुआ है हिलवीव राजौरी में और देखना होगा ऋषंत कोहली किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाएंगे। कहानी छुपी है इस नाम के पीछे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें वो महानता है। पर यह ऋषंत कोहली हिलवीव राजौरी की ओर से योगदान देखने वाला होगा। अनुज कुमार 2 पे, 3.4 के बाद 13, 3.55 का रन रेट। साजिद डार इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी की है, तिरछे बल्ले के साथ उस गैप में गेंद को खेला जरूर था पर फील्डर उस ओर तैनात थे, वो सफल हुए नहीं बल्लेबाज। और ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, अभी भी स्कोरबोर्ड टेका हुआ 13 पे, 3.5। वो पावर प्ले में उस प्रकार की शुरुआत नहीं मिली है बल्लेबाजों को जो चाहिए थी हिलवीव राजौरी को। हालांकि बल्लेबाजी उनकी बहुत बढ़िया है। पिछले 2 मुकाबलों में अगर हम देखें, वो पहला मुकाबला नजदीकी मार्जिन से हारे थे, दूसरे मुकाबले में उन्होंने जीत अर्जित की, ये तीसरा मुकाबला है द रियल सुल्तान समरब्रुक का, 9वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। सजाद डार की अगर हम बात करें, मिश्रण बहुत बढ़िया करते हैं, वो वेरिएशंस उनके पास है, विविधताओं का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर तरीके से बल्लेबाज को पढ़ने में सफलता मिलती है उनको, वो सक्षम रहते हैं, ये उनकी खासियत है। फिलहाल ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हुई है अब तक द रियल सुल्तान समरबुक द्वारा। द हिलवीव राजौरी, ये कैच लाजवाब था, बहुत ही बेहतरीन कैच था। साजिद डार ने अपनी ही गेंद पे जो कैच लपका था और रामदयाल की पारी समाप्त हुई थी। ऋषंत कोहली 1, अनुज कुमार 3, 4 के बाद 14 पे 2 हिलवीव राजौरी क्रिकेट क्लब। Immaculate from Sajidar, never easy to grab. Chance like that as he driven it straight. It was a good shot, but looking at the goodwill gesture from batter, there was just a smile, a very smile on his face. 2 for 14. Good shot this. Good intent. And this is the positive intent from Anuj Kumar. Put stamp on that. Shot of high authority. And take a look again. It comes out. Oh, look at that. Neat and clean. The immaculate once again. A good shot. Good intent. Onto the front foot. Nasir Ganai is trying to clean up the ball. To wipe out all the dust which settled on the ball, trying to shine it up a bit. 2 for 18. That's a good shot again. That's aerial. Gonna be runs. And 4 more. Second boundary of the over. On to 22. Hill Rajouri and Anuj Kumar now trying to set things ablaze here. Good shot again. Flick up the wrist. Nice woodwork. And there was a fielder, but it's way away from Mandir. Unable to get to the ball. And Anuj finds that one to perfection and finds the fence. 22 for 2. Interesting figures. That one just a single there. Tajumal Baba is there to mop it up. 23 for 2. This is a 5th over we are in. Umar Alam, prior to this one, he was right on money, but this over conceded 9 of 3 balls. Looks a bit tired, but that's good energy shown by the lad. Umar Alam still going fit, going good at the moment. These are the positive signs, and this is good thing. Umar Alam is still going strong on the field.
He continues to admire, he continues to play. This could be tight on the other end. That isn't a good return from bowler there. It would have been Anuj Kumar in all sorts of bother there. He was in trouble for a while. He has his heart in his mouth. Now he's back to the safety of crease, so no problem at all. Gets away with that one in the end. 2 for 23. He'll be batting first. They won the toss, and the captain decided to bat first. They opt to bat. Tight 4 overs from the real Sultan Sumerbugh. This over Anuj and Rishant now trying to break free, and we have seen 2 good shots of the bat of Anuj Kumar. Rishant Kohli has to play his part. He's a newcomer. It's a new beginning as far as the Red Premier League is concerned for Rishant Kohli. All the cricketers would love to hit the charts here. This is a podium at platform where you can showcase, where you get recognition. People are going to reckon your work. 24 for 2. That is a big shot. Where is this one going? It's traveling, it's gone. And he want to confirm first. But to me, it's a dismissive one. Gone for run 6 of them. Look at that shot again. Here is going to be the beautiful picture and the clear one. And take a look again. Up the middle. And it is beyond the boundary cushion. And look at the signal from Balvendra Kumar Soni. Now he confirmed it after receiving that confirmation from TV umpire. It's 30 for 2 after 5 overs. And this over, expensive from Umar Alam. 2 boundaries and a 6 coming. 15 or 16 of it. I think 16 of it. 1 big over. That's what they needed. And the beauty of cricket and that shorter format. Look, 4 tight overs, 1 bad over. It changed the complexion again. Look at the figures. There is a huge difference and the drastic change. We have witnessed it. Looks skillful. This lad who walked in. Wristy. And subcontinental batters. They're known for their wristy work. Typical wristy batters. And Rishant Kohli. Is he going to continue to admire with those shots, especially the wristy ones? 2 for 31 as we are in over number 6. This is the 6th over and the last over mandatory power play. Sajadar has picked up 2 wickets. Lucky there. Gets away with that one in the end. Eyeing to open up offside. He's trying to be on to the front foot. He's trying to come forward. He's doing that in style. After every ball, he's trying to be on to the front foot. That's a good thing. Foot movement is there. And this one, Sajid draws the blood. It's 3rd one down. 1 more goes down for Team Hillview Rajouri this evening here at the beautiful venue of Bakshi. एक और विकेट का पतन और तीसरे विकेट. अब तक के तीनों विकेट जो गिरे हैं वो तीनों विकेट साजिद डार के खाते में गए हैं. ये देख लीजिए, नीचे रहते हुए गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास. थोड़ा आपने बैंड जरूर किया था अपने आप को, पर पहुंचे नहीं थे. वो नीचे रही गेंद सीधे स्टंप पे जा टकराई और साजिद डार को मिलने वाली ये तीसरी सफलता. द रियल सुल्तान को मिलने वाली ये तीसरी सफलता. 2.3 ओवर 9 रन 3 विकेट गेंदबाजी विश्लेषण साजिद डार का. और 5.3 के बाद हिलव्यू राजौरी 31 पे 3. ऋषांत कोहली 3 पे सामने है 4 गेंदों से. अच्छी शुरुआत गेंदबाजों ने दी है. बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा है अब तक का ये गेंदबाजी विश्लेषण अगर देखें साजिद डार का, क्योंकि मात्र 9 रन दिए हैं अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं और 3 विकेट, वो तीनों के 3 विकेट उनके खाते में गए हैं. द रियल सुल्तान समरबुग. काफी उत्साहित होगी टीम. ये डग आउट
हिलव्यू राजौरी का अनुज कुमार को वापस भेजा साफ बोल्ड करके रियल सुल्तान समरबुक के गेंदबाज साझेदार ने। और अब रिशांत के साथ नंबर 5 पे उमर लेफ्टी। और क्या बेहतरीन बल्लेबाज है, गजब के फॉर्म में है। पहले मुकाबले में उतना योगदान रहा नहीं था, पर दूसरे मुकाबले में अच्छी बारी। और अब तीसरे मुकाबले में एक बार फिर इस बार सामने द रियल सुल्तान समरबुक के गेंदबाज। अब देखना यह होगा या गेंदबाजी में गेंदबाज हावी होंगे या फिर बल्लेबाजी में उमर लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज 31 पे 3। ऑफ जंप से बाहर या किनारा, जोरदार अपील। और यहां के थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। जी हां, क्या ये विकेट होगा? तो फिर संकट में जरूर। थर्ड अंपायर का निर्णय आना भी बाकी है, चेक किया जाएगा। उमर लेफ्टी पढ़ने के बाद ऑफ स्टंप पर बाहर की तरफ सरकाव था, उसका पीछा करने गए थे, छेड़खानी करने गए थे। और क्या गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा थमाई है। काफी उत्साहवर्धित 31 पे 3 इस समय 5.3 ओवर की गेंदबाजी। उमर लेफ्टी अभी अभी आए थे अनुज के साथ। और लेफ्ट हैंडर्स की बात करें तो भरमार है इस टीम में। अभी पुनीत कुमार का भी आना है, जो वो भी लेफ्ट हैंडर है। पर यहां क्या एक किनारा लगा अथवा नहीं, ये देखना होगा। अभी भी थर्ड अंपायर का निर्णय आना और संभवतः यहां देखना होगा। ओ नजदीकी मामला और आउट करार दिया गया है संभवतः। जी हां, और विकेट मिलता हुआ, एक और विकेट। उस साझेदार को चौथी सफलता। यहां पे 31 पे चौथा विकेट गंवाया है टीम ने। उमर लेफ्टी एक गेंद का सामना किया, 0 पे वापस लौटे और एक और विकेट का पतन। ये निराशाजनक प्रदर्शन और बेहतरीन गेंदबाजी साझेदार की। और यहाँ पे किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। काफी उत्साहवर्धित वो बॉडी लैंग्वेज, वह आत्मविश्वास दर्शाता है। यहाँ विकेट मिल चुका है, तो इस प्रकार से चौथा विकेट। और सबसे महत्वपूर्ण बात मनवर कि अब तक की 4 विकेट जो रियल सुल्तान को मिली है, 4 की 4 विकेट साझेदार ने प्राप्त किए। 2 tight overs from Umar Alam, and it paid off for Sajidar. Was gone for 9, but picking up 4 wickets. But that one a good go ball again. And ball, it remained in air. It didn't kiss the turf. It didn't touch the grass. It was afloat. And gloves came underneath the ball, right underneath. Is gone here. Umar lefty, the local boy, bit unlucky this evening. And he's gone without scoring, gone for golden duck. That brings Puneet Kumar, the hero of other day. The way he batted the other day, that was power pack performance. He performed really well other day. It's a new day, new beginning. 4 down, 31. Crumbling at the moment. One more plunks into the deep gorge. Tumbling, crumbling. Wickets falling. Like that of, we call it pack of cards. Falling like that of pack of cards. They're 4 down, 31 on the board. This is annoying at times as the music in the background. It's 31 for the loss of 4. And in the meantime, we'll have to wait and watch how Ankush Pandral, it's Puneet, it isn't Puneet, it is Ankush in place of. It's 31 for the loss of.
Well, it's 31 for the loss of 4. Good delivery, right on money. Good start, turnover, dig out nicely. He digs it out. Nicely done. We are into the 6th over. The last ball of over number 6 is coming up. They're already 4 down and all 4 falling into the kitty of. Good shot. Good shape there. A single turn the power play. It's completely owned by the real Sultan Sumerbugh. 32 after 6 with 4 wickets down. 4 of the batters and all 4 wickets picked up by Sajidar. That's it we have for you from the mandatory power play area. And again, Nazir in the comment box, you're gonna come in and share some words. बत्तीस पे 4, 6 ओवर की गेंदबाजी। ऋषांत कोहली 3-4 गेंदें खेली, अंकुश बंद्राल ने 1 रन बनाया है, 2 गेंदें उन्होंने खेली है और साझेदार ने 3 ओवर में 10 रन देकर के 4 विकेट पूरी तरह से तहस नहस कर दिया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। जहां तक हिलवीव राजौरी का सवाल है, पर यहां से ऋषांत और अंकुश बंद्राल 2 अनुभवी खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं और क्षमता भी है उनमें, परिस्थितियों के अनुकूल खेलना जानते हैं, इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है ये बेहतर तरीके से जानते हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना होगा। एक साझेदारी की आवश्यकता, क्योंकि आन पड़ी है वह आवश्यकता, वो दायित्व आपके कंधों पर है, उस दायित्व को निभाना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। अंकुश बंद्राल 1 पे 2 गेंदों से, ऋषांत कोहली 3 पे, 32 पे 4, 6 के बाद पावर प्ले पहला समाप्त हो चुका है। 7वें ओवर की शुरुआत, एक और परिवर्तन गेंदबाजी में नासिर गनाई को लेकर के। तेज गेंदबाज बेहतरीन कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी यॉर्कर्स बहुत बढ़िया रहती हैं, पर क्या यहाँ पे वो एक चुनौती दे पाएंगे गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को, ये देखना होगा। सजाद ने 4 विकेट प्राप्त किए और अब नासिर गनाई का चयन किया गया है। पहली गेंद अंकुश बंद्राल के लिए। आमिर सोफी टीम का हिस्सा है और अंकुश बंद्राल जानते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण परिस्थितियां, इस विकेट का कितना महत्व है ये जानते हैं। यहां बल्लेबाजी एक महत्वपूर्ण योगदान इस बल्लेबाज का। 32 पे 4, अंकुश बंद्राल सामने, नासिर गनाई। परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं ये देखना होगा। तीसरे गेंदबाज का चयन उमर आलम और साजिद डार ने शुरुआत में गेंदबाजी की और अब नासिर गनाई का इस्तेमाल किया गया है और नासिर गनाई कितना योगदान दे पाएंगे अपनी टीम के लिए ये देखना होगा। 32 पे 4, 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद पर रन नहीं आया, पर यहां अच्छी गेंद थी, कट गया 2 खिलाड़ियों के बीच में से, पर पीछे फील्डर तैनात हैं और जब तक वे गेंद को फील्ड करते डीप पॉइंट से दोनों बल्लेबाजों के पास संभव थे 1 रन लेने का अवसर, वो रन पूरा किया और 1 रन और खाते में। 33 पे 4, 6.2 के बाद। पर ये पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, एक योगदान रहने वाला है बल्लेबाजों का। हर 7वें ओवर की गेंदबाजी, ऋषांत कोहली सामने। इस बार थोड़ा लेट जरूर खेले, आड़े बल्ले के उसको दिशा दे दी थी और जब तक फील्डर आकर के बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास सिंगल लेने का। 34 पे 4, 7वां ओवर, ऋषांत कोहली 2 पे, क्षमा कीजिएगा अंकुश बंद्राल 2 पे 4 गेंदों से, ऋषांत कोहली 4 पे 5 गेंदों से, पर सामने अंकुश बंद्राल। 34 पे 4, ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। नासिर गनाई, अच्छी गेंद थी, लगा लेगो मिडिल स्टंप पे, ज्यादा अवसर नहीं दिया वहां बल्लेबाजों को हाथ खोलने के नासिर गनाई ने इस ओवर में, क्योंकि अब तक 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर में और 4 गेंदों से 3 रन आए हैं, तो कुल मिलाकर अच्छा ओवर कटा है नासिर गनाई का। जहांगीर जोन
जिसमें थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए 35 पे 4, 6.4 ओवर की गेंदबाजी। 2 के दुकाना बाकी। रीशांत सामने, नासिर गनई के 3 सिंगल आ चुके हैं। स्ट्रोक बेहतर और फील्डिंग बेहतर। केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन से इस समय संतुष्ट रख रहे हैं बल्लेबाजों को। ये रन संख्या 36 तक पहुंच चुके हैं 4 विकेट पे। अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। द रियल सुल्तान समरबुघ बनाम हिलव्यू राजौरी, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। और जी हाँ बिल्कुल, अगर जेके स्पोर्ट्स टाइम की बात करें तो जो हमारी ऑफिशियल टीम है उसके एक सदस्य हैं फैसलवार, वो भी उपस्थित हैं कमेंट्री बॉक्स में, एंजॉय कर रहे हैं। ये खूबसूरत है, स्ट्रोक कमाल है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। मिल जाएंगे 4, एक और चौका। रन संख्या पहुंच गई है 4। अंतिम गेंद पर आया चौका। 7वें समाप्त बने 40, खोए विकेट 4। द रियल सुल्तान समरबुघ के विरुद्ध हिलव्यू राजौरी। Forty for 4 after 7 overs. 8th over is about to start. Rishant Kohli has a role to play. Huge responsibility on his shoulders tonight. Need to shoulder the burden. Anchor the innings. Tight situation in the middle. Change in the bowling. Nasir ball 1 overs, none for 8. Another tight over. Not that much from it. And from that last over. And the fresh over is going to be another one. Another good one. But it will be early to say it's going to be a good one. Looking at the circumstance, it looks like that they're all decided they have to live up. How much energy do you have in this? Forty for 4. 7 overs. Four. 40 for the loss of 4. 40 for the loss of 4. We are in over number 8. And just made the very first ball. We're just talking about that. He's gonna try and maintain the discipline. The first ball pulled to perfection. A good shot. And a good start 10 over here. I was talking about that others did bowl well in the right areas. He will try to follow the pattern and follow the footprints of others. Banger in shot. But that's a claw shot of the bat of Rishant. Thin about it, young lad. Looks like he's going to be future prospect. Young lad. He's going through younger days of his life. He's younger, he's young lad. He's got all the shots in his kitty. That shot that makes him sound better. The other beautiful thing about this lad, why I use it a word, he's going to be skillful and he can be future prospect, a star in making. After the boundary, he looked for a single, and I saw him playing some of the shots earlier on. And he scampered through time and again for ones. Looking for ones. .45 for the loss of 4 in over number 8. Very good start turn over there. It's already 5 of it, and that's what they need. Batters have to find the runs. The execution is required. To attain the perfection, you have to carry on and continue, keep going. Never give up. Is going to be the option for the two batters in the middle. That's little uppish and aerial, but it's in the gap too. No problem at all. They're looking for the second one. Good running between the wickets. Lazy man there. Lazy fielding approach. Laziness shown by the man in the deep there at a wideish long off area that allowed the second run. The two batters cashed on.
Good awareness of the game. Great presence of the mind. You can't get overcautious. That's good thing. That's the positive sign from the two batters. Again a good shot. Breaks free. Let the ball turn. Let the ball turn. It's moving outwards. And Jasmeet Nan is operating at the moment. He's got that outward moment. And batter is waiting for ball to move outwards, then laying bat onto the ball. That's a good cricket. Playing the ball on merit. Going for ones and twos. Partnership is required. They need a partnership, a stand. Getting together. Acting wisely. 48 for 4. Well directed one from Jasmeet. Right on money. And Rishant. Back and cross a little bit there. Gets away with it in the end. Shaukat Mehdi. Bit tired at the moment. 48 for 4. In 8th over. Jasmeet Nan. Bowled 5 balls for 8 runs. Fuller one again. Driven. There is a fumble. He's made mess of that. Nearly made mess of that. Gonna be brace. And with that couple, it's 50 up. In 8th over. 8 gone. 50 for the loss of 4. Rishant Kohli and his good Ankush Bandral. Rishant moves to 12 of 10 balls. And Ankush is on to 10 of 8 balls. It's 50 for 4 after 8 overs. Little attendance here. Watching the game, which is unfolding. Game number 9 of the tournament. The 9th one is underway. The action is gonna continue for next couple of days. On the trot we have games, we have double headers coming up for you guys. So those who want to be part of this event, those who want to this game of cricket and catch the action, physically here you have to buy a ticket. That link is available on JK Sports Time also, and you can find it out there, and you can earn it, you can buy it. First buy it, then enter the stadium and enjoy the cricketing vibes. Try to touch the excitement here, which is very high. Shaping for sweep shot. Doesn't connect it. Stays touch low. 4 down, 50 on the board. It's 50 up. We're into the 9th over. Vijan Panchal is given the ball. Vijan? With what kind of vision? That is a full toss. Oh, there is a boy. Oh, come on. This isn't good from those who are the Gudans of this lad. The young kid was there. Had it hit that boy, would have been heart-wrenching. But luckily, Alhamdulillah, is fine. He's okay there, no problem. Take a look again. Look, oh, it was just going to hit him. Oh, he saved it by inches. And parents should take care of the awards. This isn't good at all. It's a cricket match going on. Ball can go anywhere. Try to control them and keep them under your eyes. Or driven handsomely again. Getting to the pitch of the ball with a 90-degree elbow. Shown the bat face. Open at the bat face. Vijan is taken on for another 4 here. Good shot from the bat of Ankush. And there are going to be praise for the lad. Teammate cheering for their teammate who's in the middle. As they were 4 down, now these two batters are trying to resurrect. The damage is already done. But Ankush and Kohli can put them in a driver's seat. They can take them to some sort of respectability. But that marks the completion of Ankush Bandral's inning. He's gone. He's clean bowled here up the bowling of Vijan. Vijan with that superb Vijan gets his man. And talking about that, commentators, because once again I was just talking about that these two
tried really well, and they're now keeping things tight. They are trying to sit each a stand, and they're trying to share a stand, building a partnership. But look, all of a sudden, there is wicket coming for Vijan and the team. Fifth one down, hop their team back to hut. धन्यवाद मानवर। पांचवा विकेट और पांचवा नुकसान उठाना पड़ा हिलव्यू राजौरी की टीम को। एक हर्डल बना करके इस समय टीम द रियल सुल्तान समरबुग 58 पे 5, 9वें ओवर में एक गेंद का भी आना बाकी और विजन पंचाल को ये विकेट मिलता हुआ अपने 5वीं गेंद पर 8 रन दे करके। अच्छी गेंदबाजी हुई है, 4 विकेट साजिद डार को, 1 विजन पंचल को। उमर आलम को सफलता नहीं मिली, नासिर गनई को सफलता नहीं मिली। ऋषांत कोहली 12 पे 10 गेंदों से। और अब नए बल्लेबाज हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब के लिए नंबर 7 पे ऋषांत कोहली के साथ पवन निर्वाणी एक और बल्लेबाज। पवन निर्वाणी अनुभवी खिलाड़ी हैं। एक साझेदारी की आवश्यकता है यहां पे टीम को। हिलव्यू राजौरी की अगर हम बात करें कि वो साझेदारी यहां से निभा पाएंगे, ये देखना होगा। 58 पे 5, 8.5 अंतिम गेंद विजन की। सामने पवन निर्वाणी। इस बार कोशिश जरूर थी पर वह असफल हुई। पीछे खिलाड़ी हैं, सिंगल मिल जाएगा। इस आखिरी गेंद पर 1 रन और 9 समाप्त। 59 पे 5 हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब। 9वां मुकाबला और यहाँ पे एफर्ट जरूर था, कोशिश जरूर थी, पर गेंद हाथ से लगने के बाद, हाथ से टकराने के बाद छिटकी पीछे उस ओर चले गई जहां फील्डर तैनात थे। अंतिम गेंद पर सिंगल है। 9 के बाद 59 पे 5, 11 ओवर का खेल शेष है और 5 विकेट सुरक्षित। ऋषांत कोहली 12, पवन निर्वाणी 1 और आमिर सोफी का इस्तेमाल गेंदबाजी में। एक और गेंदबाज का चयन, संभवतः वो अभ्यास कर रहे हैं, गेंद उनके हाथ में, क्या उन्हीं से ही गेंदबाजी कराई जाएगी, ये देखना होगा। कोशिश जरूर होगी यहां पे और निराश नजर आ रहे हैं वहां पर रामदयाल, क्योंकि आज उस प्रकार का योगदान नहीं रहा उनका अपनी टीम के लिए। पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया था पर आज के मुकाबले में वो कोई खास योगदान नहीं दे पाए। ये 9वां मुकाबला है, पहली पारी, और हिलव्यू राजौरी की टीम इस समय पहली पारी के आधार पर बल्लेबाजी कर रही है द रियल सुल्तान समरबुग। 59 पे 5 जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल ये लाइव प्रसाद तक पहुंचा रहा है। साथ में रेड एफएम जेके, आप एंजॉय कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, हिस्सा बन सकते हैं। और यदि आप मैच को एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ मैदान में, तो फिर आप ऑनलाइन जाकर के टिकट बुक कर सकते हैं district.in से। वापस खेला बॉलर की दिशा में, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद जा रही है, फील्डर हैं, मात्र एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और 10वें ओवर की शुरुआत। आमिर सोफी का चयन। एक और गेंदबाज उमर आलम, नासिर गनई, साजिद डार और उसके अलावा विजन पंचल, चारों, ये 5वें गेंदबाज का चयन हुआ है अब तक इस पारी की। अगर हम बात करें गेंदबाजी में द रियल सुल्तान समरबुग के लिए, आमिर सोफी 60 पे 5। लेग स्टंप पर एक हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा है पर अंपायर रवि ने इसको स्वीकार नहीं किया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। शांत धीमा क्रिकेट पर अच्छा क्रिकेट। और पिछले मुकाबले में रॉयल गुडविल ने अंततः जीत अर्जित की, सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। वो पहला मुकाबला खेल रही थी इस प्रतियोगिता में और गुडविल ने 3 मुकाबले खेल करके तीनों में जीत अर्जित की और अंक तालिका में अपने पूल से वो सर्वश्रेष्ठ है, 6 अंक लेकर के सर्वश्रेष्ठ। 61 पे 5, 9.3 के बाद 10वां ओवर। आमिर सोफी पवन निर्वाणी के लिए। इस बार निर्वाणी ऑप्शन से बाहर निकलते हुए गेंद पर स्वीप मारना चाहते थे पर गेंद और बल्ले का सही समय पे संपर्क नहीं हुआ। गेंद या थमाई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। इस बार ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ खेला जरूर है, फील्डर तैनात हैं, केवल 1 रन और मिलेगा। और इस ओवर में अभी तक 3 सिंगल आए हैं, 2 डॉट गेंदे, कुल मिलाकर 5 गेंदों से 3 रन आए हैं। अंतिम गेंद का आना बाकी। अच्छा ओवर कटा है आमिर सोफी का। 62 पे 5। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना, खराब गेंदों को सही नसीहत देना, ये मानसिकता होनी चाहिए बल्लेबाजों के।
क्योंकि 5 विकेट अभी भी हाथ में, और यहाँ से जो आने वाले 4-5 ओवर हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक पार्टनरशिप की आवश्यकता। फिलहाल अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ, 10 समाप्त, 63 पे 5। द रियल सुल्तान समरबुक के विरुद्ध हिल व्यू राजौरी क्रिकेट क्लब। ये निराश चेहरे जरूर नजर आ रहे हैं, कहानी बयां कर रहे हैं, यहां से एक पार्टनरशिप की आवश्यकता और वो साझेदारी निभानी होगी पवन निर्वाणी और ईशांत कोहली को। और क्या लक्ष्य रहेगा पहली पारी के आधार पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 ओवर, आधा सफर लगभग तय हो चुका है, क्योंकि 10 ओवर की गेंदबाजी, ये पहला सत्र समाप्त हो चुका है। और 10 में 63, 6.30 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने जरूर हैं, पर आधी टीम पवेलियन लौटी है। हिलव्यू राजौरी की उनमें क्षमता है, क्योंकि हम पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें, उनके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी लाइनअप है, और लाइनअप की बात करें उसमें अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। होता समाप्त, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद दोबारा से खेल प्रारंभ होता हुआ अगला सत्र यानी कि दूसरा 10 ओवर का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आमिर सोफी ने 4 रन दिए, नेवर की शुरुआत, 11वां ओवर ड्राइव किया पर सीधे खिलाड़ी के पास, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन गति पे थोड़ा अंकुश जरूर लगा है, पवन निर्वाणी और ईशांत कोहली प्रयास में है। विजन पांचल का इस्तेमाल एक बार फिर गेंदबाजी में, तिरछे रन के साथ क्रीज के कोने से सीधे बल्ले से प्रयास था फील्डर का, पर सफलता नहीं मिली। बैकअप पे नासिर का नहीं है, एक सिंगल मिल जाएगा। एक रन और खाते में, 63 से बढ़कर 64, 5 विकेट पे और 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, और 64 रन बन चुके हैं। पवन निर्वाणी, ईशांत कोहली, हिलव्यू राजौरी के लिए एक साझेदारी का प्रयास। इरादे स्पष्ट हैं, कोशिश में जरूर हैं कुछ बड़े स्ट्रोक, पर गेंदबाजों ने अवसर नहीं दिया। अच्छी गेंदबाजी हुई है इस बार, डाउन द ट्रैक स्टंप्स पे घेर दिए। लीजिए वापस लौटना पड़ेगा कि रन गति पे अंकुश था, रन आ नहीं रहे थे, और ऐसे में धीमी गति से तंग आकर और रन गति को उछालने का प्रयास किया। डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे, पर पलक झपकते ही बेल उड़ा दी, विकेट मिल गया छठा, 6 हिलव्यू राजौरी। और ये देख लीजिए, वो वापस सुरक्षित क्रीज में पहुंचने का समय नहीं दिया विकेट कीपर ने। बहुत ही बेहतरीन ये स्टंप आउट।
64 पे 6, 10.3, पहली डॉट, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे आया विकेट। और अब पारस शर्मा आज उन्हें नंबर 8 पे भेजा है। पुनीत अभी तक बल्लेबाजी नहीं, क्या वो प्लेइंग 11 में है अथवा नहीं, ये देखना होगा। पुनीत कुमार कल नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे और आज पारस शर्मा नंबर 8 पे। पारस शर्मा ने कल नंबर 3 पे बल्लेबाजी की थी। थोड़ा सा यहां पर भी बैटिंग ऑर्डर में परिवर्तन किया गया है। ये हिलवीव राजौरी कुछ अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट। पिछले 2 मुकाबले खेल करके एक में जीत, एक में हार, ये तीसरा मुकाबला। 64 पे 6, 11वां ओवर। स्टंप्स के सामने अजय बिल्कुल भाग्य ने साथ दिया। 64 पे 6, 10.5 ओवर की गेंदबाजी। विजन पंचल को 2 विकेट मिले हैं, 4 साझेदार को मिले हैं 6 विकेट। अगली गेंद लेकर के इस बार सम्मान दिया, बैट और पैड मिला करके गेंद को खेला जरूर, फील्ड हुई गेंद, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 11 समाप्त। 64 पे 6, हिलवेव राजौरी क्रिकेट क्लब। पारस शर्मा 0, ऋषांत कोहली 15, 5.82 करंट रन रेट। और शिकंजा का सवा 9 ओवर का खेल। यहां से रन गति को बढ़ाना होगा क्योंकि आपके पास 64 रन जरूर है 11 ओवर। 9 ओवर में अगर आप 60-70 रन और जोड़ लेते हैं तो 120-130। और ये विकेट पिछले 4-5 मुकाबलों को उठा करके देखें तो 209, 199, 185, 179, 169। और अब इस विकेट पे रन बनते हैं। और दूसरी पारी में चेज भी 190 हुए हैं और 169 का लेग्स का पीछा करते दूसरी टीम ने 165 बनाए हैं। वो चीज हम पहले मुकाबले से डिस्कस कर रहे हैं, उस पर मंत्रणा करते हैं, चर्चा करते हैं कि वो संयम नहीं दिखा है, वो धैर्य नहीं दिखाया है। क्योंकि स्टार्ट शुरुआत में बल्लेबाजों को बेहतर मिला है पर उस स्टार्ट को एक बेहतर पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखी है इस टूर्नामेंट में अब तक मुकाबलों में। और खूबसूरती के साथ गैप में और गेंद सीमा रेखा से बाहर, मिल जाएंगे 4। हिलवीव राजौरी को चौका बटोरा ऑप्शन से बाहर, तिरछे बल्ले के साथ अंतिम समय में उसको दिशा दे दी। वो फील्डर आमिर सूफी को बीट किया और वहां 4 मिल गए। इस समय बल्लेबाज को कमाल का शॉट था, 4 और खाते में। और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंच गई है 68 पे 6 विकेट पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी। और ऋषांत कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण है और अंत तक खेलना होगा ऋषांत को। पारस शर्मा को सहयोग करना होगा बेहतर तरीके से। एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, ये दूसरा लगातार चौका। वहां पर मिस फील्ड हुआ और नतीजा जहां पे केवल 1 रन होना चाहिए था वहां चौका मिलता हुआ। अब विकेट पे खड़े रहिए, ठहरिए, आत्मविश्वास रखिए, संयम धैर्य रखिए तो रन जरूर आएंगे। ऋषांत कोहली, हाँ यहां पे चौका, 4 और खाते में। बल्लेबाजी बेहतर, 72 पे 6, 11.2 ओवर की गेंद, 23 पर पहुंच गए ऋषांत। 17 गेंदों से यशजीत का पहली बार इस्तेमाल, 2 गेंदों से 2 चौके। यशजीत की शुरुआत अच्छी हुई नहीं है गेंदबाजी में, इस बार ऑन साइड में। 1 रन के लिए दौड़ पड़े, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? मना किया नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, वापस भेजा वहां पर खिलाड़ी को। 1 रन जरूर मिल जाएगा, केवल 1 से संतुष्ट। 73, 1 रन से पारी को चलाना होगा। 2 चौके आ चुके हैं, बुद्धिमानी का परिचय। 1 सिंगल वही पास में खेल करके दौड़ लिया। 3 गेंदों से अब तक 9 रन आ चुके हैं, 3 गेंदों का आना बाकी। 73 पे 6, 11.3। यशजीत का पहला ओवर, ये छठे गेंदबाज। नासर गनई, उमर आलम, साजिद डार, यशजीत, विजन पंचल। तिहत्तर पे 6, 11.3 ओवर की गेंदबाजी। 9वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जेके सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। और सोपोर स्टैलियंस ने अभी तक इस टूर्नामेंट में मुकाबला नहीं खेला है और आने वाले दिनों में उनका मुकाबला, जी हाँ। 73 पे 6, ऑन साइड में 1 रन और
ग्लोबल डडू टाइटन से एक मुकाबला खेला, हिलवेव राजौरी का तीसरा मुकाबला, सुल्तान वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो रियल सुल्तान समरबुक का दूसरा मुकाबला, रॉयल गुडविल ने 3 मुकाबले खेले हैं, सुल्तान ने 1 मुकाबला खेला। ये कहानी है। और अथवास इंडिया की बात करें, उनने 2 मुकाबले खेले हैं। 74 पे 6 11.5 के बाद अंतिम गेंद का बाकी यश जीत 10 रन। क्या यश जीत की जीत होगी अंतिम गेंद पर? जी नहीं, रन मिलेगा। आखिरी गेंद पर आया सिंगल, ओवर से आए 11, 12 समाप्त, 74 पे 6, हिलवेव राजौरी। $75 for 6. We are in over number 13. 2 overs, 2 for 10, Vijay Panchal. Rishant Kohli. Excellent 25. A young lad. He has shown that improvement. Gutsy, under pressure. Tall stature when it comes to the batting and the techniques. Thinner body, not that much tall, but the techniques, the tactics he possesses. We're into 13. It's a rock back call is for 2. The young lad is responding. Paras coming at 8. No problem with the batting lineup and that depth in the batting. They do have a great depth in the batting lineup. The way the real Sultan Sumerbugh bowled today, that was awesome. That was a brilliant stuff. They bowled brilliantly in today's game. There was accuracy, precision, precise. They bowled in the right directions, teasing batters, unsettling them ball after ball, tightening the nose, troubling batters. Gonna be quick, got to be quick. A single like this. Oh, good running. Gutsy again. Young lad, he's got that power. He's got that energy. Nerves of steel. Fearless, under 27 of 21. Rishant Kohli is the name. Vijan continues. He's reading ballers really well here. Read him again. Rightly. And keeps it away. Another beautiful thing about Rishant is the rotation. You can see that he has used 22 balls and is under 28. The strike rate is nice. He's middling the ball. He's placing. He's trying to fill the gaps that you call the fill in the blanks. Flat return. Shy comes in. He shied it in. We're into the 13th over, 6 for 80. It should be 81 after 13 overs. 7 overs are going to come. 42 balls. If they go run a ball, 42 runs will take them 123 around that. And if they get there, they will be thanking the divine forces. And that is going to be the thankless job for their side. One stage they were in tatters. The next stage they can set 123 for their opponent side. Partnership is going to be key.
the two men in the middle should try and build that partnership or find a way to get out of trouble. They're caged at the moment. Brilliant shot again. Good shot. Good connection. Brilliant one. Wide of the extra cover. A man from long off comes in to stop the ball. Telling about that lad how fit he is. He covered almost 10 to 12 yards getting to the ball. Good field in the end. Save 2 runs. Dot balls, and that dot ball percentage will bring a certain amount of pressure. Once there is a pressure on your nerves, you can lose that momentum, and sometimes you can get overcautious. That is the problem with this. We have seen that batters getting overcautious after getting troubled, after facing the tough times in the middle, unable to find the gaps. When you fail to do so, when you fail to use that formula of fill in the blanks, once you get in that territory of where you're unable to find a gap, the runs are not coming, singles are dried up, you have to take a chance, and sometimes you have to take a undue risk, and that's a good shot. And Hinan is the boy who keeps it down to couple again. Once you bowl in the right directions, all of a certain team feels that we are here to back our bowlers. They find that energy and they feel that we have to support our team, we have to back our bowler and provide him that stability so that he can bowl in the right direction. You feel that atmosphere is helpful and the wicket is where I can earn some purchase. 85 for 6 in over number 14. Little attendance again. Early this afternoon and till late evening there was a huge gathering. That's a good shot. Roll back and come back. But there is a man. Oh, he's gone. He's taken by Vijay. He's taken by Tajamal Baba in the end. It gone straight to him. It was a good strike. For a while it looked like, but didn't got the elevation. Find is the man. It dropped in. Safe hands of Tajamal Baba. No problem there. Easy one look. Easy take. Good go. Into the safe hands, Tajamal Baba says. He was just playing with the ball there. And Paras is gone. His eyes lit up for a while. Even I thought that's a good strike. It was a comeback. The way he pulled the ball. But there was no elevation. And now the distance. So he's gone. It's 85 for 8 now. And who's going to come in at number 10? The real Sultan Sumerbugh. Finding a way back into this one. And there was a little partnership growing for a while. Rishant Kohli. He's standing like wall. Standing tall. Fighting it out. Fought hard for these 28 invaluable runs. With that supreme touch. Sublime and gorgeous nick. 85 for 7. 8. 85 for 8. Correction comes in. And score is yet to update. I'm telling you early. The rate down 85 and the new man walks in. Join is Rishant Kohli in the middle. Even Rishant wasn't happy. Looking on that portion when it landed in the safe hands. Rahan Kohli is in. Early morning. I still remember that big 6 of the to finish the game in Pulwama early morning. That was colossal hit beyond the boundary line, way behind. But here he has a different situation. It's a tight situation in the middle. Are they 7 down or 8 down? Just 7 down, 86 on the board. The score ticker is little slow. Correction again.
It's just 7 down. Hinan is quick. Hinan is pumped up. He's energetic. 7 for 86. Trying to energize. This is 15th we are in. Rohan Cole. It is well when big shots are not coming and there is no offer from bowler. One thing you can do with these is to look for ones and twos. And the situation is demanding you have to bat 20 overs. And they are running out of resources here. Having just 3 wickets in kitty, intact. The first and foremost duty is to bat 20 overs. If you bat 20 overs, believe me, you can still finish around 130. Even beyond that. First duty, which is obligatory on these two lads, which is their obligation, and it's on us on the 2 men in the middle to bat till the very last stand. Vijan and the company would love to wrap it up as early as possible. Rohan has that instinct. He can come up with a special cameo. It was a Rishant Kohli scorer, need to understand it. It was Rohan Cole on strike. We're done with over number 15. 5 overs are going to come. 10 and over is what they require at least. And if they score at the rate of 6 and over, 7 and over, 8 and over, they will be pretty happy. But to me, 10 and over is the requirement. And the situation is demanding, if you can find 8 and over without any damage, without further damage, then that's still going to be good. That's going to be a good purchase. 7 for 87 after 15. Yes, Jeet has got the ball. Economy of 7.50. 2 overs, 1 for 15. Rohan. It's Rishant Kohli on strike now. Scorer need to rectify it. He's good at it right now. The way he's middling the ball and is working it away nicely. We are into the 16th over the first ball. It yielded a single. What's going on with our scorer? I think he need to adjust it. Oh, that's good. That's nice. Now he has worked on it. That's a good thing. 89 for 7. He rectified it. Rohan is going to be on strike. Yashjeet, 2.21 for 17. First over that was expensive from Rishant. And it was big. First over was expensive from Yash. And you still remember those quality shots of the bat of Rishant, the young lad, coming with 2 cut shots. One that gone wide of the man. The second one, he parried it to the fence and back with a point. 90 for 7. This is the 9th game of JK Super Cement Red Premier League presented by Atwas. Yes, it is 3rd over. Has been a good option for Captain Umar Alam over the past couple of days. The way he bowled, he kept things tight over the past couple of days. Once again, he's living up to his expectations. He's bowling really well in right directions at the moment. He's keeping it simple and tight, not letting the batters walk away. 91 for 7. This is 16th over we are in. Rohan this time trying to break free. Once you beat the man on edge of the circle, there isn't anyone patrolling behind Amir Sofi. There is a big space, a vast field available for you where you can find a boundary more than a single.
This one, there is a shout, and umpire is unmoved. Not shaken, so no problem at all. On to 92. Hillview Rajouri. Take a look again. Good call, good decision. There is a big daylight between that pad and the stumps. So no problem at all. Leg by signaled by Ravi Kumar Chaurasia. 7 for 91. Rishant, what I reckon is a great player, is going to be future star in making one great finding for Hillview. That too when they were down and out. He stood his ground, batted firmly with composure and well composed. 32 of 29 balls. Rishant Kohli, the one who's looked unbeatable this evening. Others, they were down and out. Some of the good catching from a fielding unit, and to compound that, some of the terrific spells from different lads. As a team, as a unit, coming hard at opponents. Hillview, concerned faces. The coach looks off color at the moment. What to do, how to do. Now how I maintain that net run rate to be back on track in the tournament. This is the must-win game for their side. They have another opportunity. But to win here will mean they have 4 points. They will have 4 points. A team having 4 points can think of something good, something special in the tournament. They will remain in contention of qualification. And the team which has just a single victory out of 4 games, you can understand yourself. They're going to land themselves in a difficult phase and territory where they're going to rely on other results. 94 for 7. One more is down here, and Nasir Ganai providing his side with 8th one here, and it's Rohan Cole on his way. He's clean bowled. The low bounce is teasing the batters. No one is ready to bite the bullet. They are not ready to stay firm. Look, there is no need to go hard like this without finding the ball where it is. There was an end bounce, still going hard at it. Misread it again. Ball stays low. In a hurdle again, back into the hurdle. Puneet Kumar is in at number 10 now. Why they kept Puneet Kumar for the fag end? I think they were just trying to bide the time and let Puneet come in and play that possessive cricket where you had just 20 or 15 odd balls to pace, and he's going to go downtown and distant. Is he going to do that here? Is he going to go for the kill? Is he going to go for the full Monty? Will he find the boundary with ease? Not going to be easy at all, because there isn't that much bounce the way we saw yesterday. That he played that remarkable knock. But today it's a different surface. There isn't that much bounce where you can feel that it's in my zone where I can freely hit it out of the park. I can use that up the sleeve style or use that long handle. Today it's a difficult phase. And even for the other side, the real Sultan Sumerbugh, they would love to restrict to them around 100. Anything around 120 will make it a good contest, because ball is keeping a bit low. That is going to be in their eyes at the moment. Hillview Rajouri will be eyeing, and they will thank Puneet and Rishant if they finish around 120. If they take them to 120, that will make it a good respective total. And bowlers will feel we have something to bowl at. Not just bowl at, we can make a game out of it, a match out of it.
94 for the loss of 8 wickets. Puneet Kumar, and there is a message, you got just 2 balls to face. Only boy, Rishant Kohli, well others, they were unable to put money on their wickets, they were unable to put premium on their wickets, but Rishant Kohli, he read the surface very well. That means the one who shown that grit, he has something in kitty and store. He's going to be a batter who's got the recognition in today's game as far as the podium and platform is concerned. And we have different channels to broadcast. People are watching this lad. They're going to observe this. And they're going to be some of the big names across the valley right now. Keeping eyes on the lad. The way we saw Umar Zuhur, who reaped harvest in terms of getting praised or attracting some of the big clubs and attracting them in such a way with that fine work when he was batting here. The way he batted, everyone was praising, and he received enough praise for that class act with the bat. Now what remains to be seen, is he going to get that sponsor in near future? But the other important thing is this lad is going to be the another one. To me, he's the latest finding of the tournament, and people will also talk about this lad. Wasn't easy surface to bat on, but he's shown that decency and the gutsy approach that I'm the best in the business. I have to prove my mettle. I won't give up. I will fight till the very last end. And he's still there in the middle. Sajjad, the pick of the bowlers, inside the line, trying to distract the line of bowler, and it's given as leg byes. But he's going to take that boundary. And with that helpful 4, he was just trying to help it away. And with that boundary, there is going to be, with those 4 important runs, I think it's 100 up for Hill v Rajouri. Is it 100 up? Let me confirm. It's 100 up. Finally, into the triple figure. Oh, look at that. Glorious. Gorgeous. In no time it goes past. What a finding. Breathtaking. Swashbuckling knock. Look at that shot again. Oh, wonderful. Scare cut comes into play. Down to the back with a point boundary for 4. The experienced lads in the dugout. There is pep talk going on. They're whispering. So that means they're exercising their lips, looking at this young lad who's gone well. And look at that shot again. The one who picked up 4 wickets is now leaking runs. There is a chance. Oh, they needed directed there. And as a captain, as a leader of the pack, you would love to get rid of Rishant Kohli. Moves to 40s, moves into the 40s, on to 40. 106. As I earlier mentioned that they need to bat 20 overs. If they bat 20 overs, they will finish around 130. More than that or around that, still going to be a good contest to watch. And something late into the night, this one is going to prolong. And talking that longevity, you're going to get your money's worth. Watching on JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube, and Red FM JK. First occasion where he's unable to lay bat onto the ball properly. And he's beaten on that occasion. But that showing that cool head. And the way he batted, it was compact, impactful one. It's 106 for 8. First time he decided to break free like this and trying to step out onto the front foot. No connection again. 2 dots
and first of its kind, when he decided that I'm going to show the aggression, I'm not going to defend deep down the crease and dab it away. 106. He knows that we need runs. That's the beauty of Sajid. He finished his quota of 4 overs. 4 overs, 4 for 16. Oh, wonderful figures. And Rishant Kohli is a player to watch out. And later on, people will go through the different videos on Facebook and YouTube. They will try to find out the technique of the lad, how he batted on a surface where bowlers getting better of the batters, but the only one man who provided his side that stability they needed, they were missing, that was missing, they were lacking. Now this lad has decided to come up with a decisive and one brilliant knock of 40. 18 समाप्त 106 पे 8 पुनीत 1 ऋषांत कोहली खूबसूरत बल्लेबाजी क्या टैलेंटेड खिलाड़ी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया सवारा पारी को जब जब आवश्यकता पड़ी स्ट्रोक खेले दर्शनीय स्ट्रोक स्क्वायर ड्राइव्स कवर ड्राइव सामने स्ट्रेट बाउंड्रीज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका इस पारी में तो 106 पे 8 18.1 के बाद 19वां ओवर नासिर गनई का तीसरा ओवर 11 रन दिए 1 विकेट अच्छी गेंदबाजी की है नासिर गनई ने नियंत्रण दिखा है उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन वो अनुशासन आज जरूर दिखा नासिर गनई की गेंदबाजी में पुनीत हैं सामने फुल लाइन की गेंद ऑन साइड में एक सिंगल के लिए दौड़ पड़े बाएं हाथ के बल्लेबाज सिंगल मिल जाएगा ऋषांत एक बार फिर सामने होंगे 40 पे कुमार 2 पे और 107 पे 8 19वां ओवर अच्छी बल्लेबाजी और 120 130 अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है इस विकेट पर क्योंकि विकेट थोड़ा धीमा है गेंद नीची रह रही है और इस पर उतना ज़्यादा अतिरिक्त उछाल है नहीं तो दूसरी पारी में अगर आप 130 के आसपास पहुंच जाते हैं फिर अच्छी शुरुआत रहती है गेंदबाजी में तो एक चुनौती जरूर रह सकती है 107 पे 8 ये ऋषांत के बल्ले से गैप में गई जरूर है पीछे तजमुल बाबा है रोका जरूर है पर एक सिंगल मिल जाएगा ऋषांत और पुनीत को 108 पे 8 3 गेंदें इस ओवर के अंतिम 9 मात्र गेंदें बची हैं पहली पारी में इस 9वें मुकाबले की पहली पारी की अगर बात हम करें नासिर गनई ने अब तक 3 गेंदों से 2 रन खर्चा अच्छा ओवर अभी तक गया है फिर इस ओवर को और बेहतर करना है तो फिर रन ज्यादा खर्चने नहीं होंगे ये पुनीत के बल्ले से और जाकर के दम लेगी स्टैंड्स में गेंद और 6 का निर्णय था अंपायर बलविंद्र कुमार का इस छक्के के साथ नासिर गनई के विरुद्ध एक कड़े प्रहार पुनीत कुमार द्वारा हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ अच्छा स्ट्रोक था और सही समय पे कनेक्शन मिडिल ऑफ द बैट से पुनीत 8 पे 6 गेंदों से 114 पे 8 वो 130 और अवश्य तौर पर उस तक पहुंचने का प्रयास वो सफलतापूर्वक नजर आ रहा है क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी पुनीत बार बमुश्किल बचे अंदरूनी भाग स्टंप्स के बिल्कुल पास से वहां पर डाइव लगाकर रोकने का असफल प्रयास अब दूसरे प्रयास में जब उमर आलम गेंद को फील्ड करते तो ये पलट कर कुछ रन जरूर बटोर रहे हैं बल्लेबाज 18.4 के बाद 114 यहां देखना होगा 2 अथवा 3 तो 3 रन और खाते में 117 पे 8 निश्चित तौर पे इसकी आवश्यकता भी है और कोशिश भी है और सफलता जरूर मिलेगी नासिर गनई का तीसरा ओवर इस समय ऋषांत कोहली 41 पे अच्छी बल्लेबाजी की है कोहली ने एक और खूबसूरत स्ट्रोक बेहतरीन स्ट्रोक कोई मौका नहीं गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर ये चौका मिलता हुआ और क्या लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है ऋषांत कोहली ने दर्शकों के मन मोह लिया इस खिलाड़ी ने युवा खिलाड़ी है हिलवेव राजौरी के और क्या कमाल की बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट बढ़िया टाइमिंग लाजवाब चौका बटोरा इस अंतिम गेंद पर 19 समाप्त अनुभव की कमी नहीं है इस खिलाड़ी में ये बड़े स्तर का खिलाड़ी है और निश्चित तौर पे
शानदार प्रदर्शन इस युवा खिलाड़ी ऋषांत कोहली का 45 पे बाद 39 गेंदों से। और सबसे बड़ी बात कि गंभीर परिस्थिति में पारी को संभाला, सजाया, संवारा, जब जब आवश्यकता पड़ी बड़े स्ट्रोक, खराब गेंद को सही नसीहत दी, अच्छी गेंद पर सम्मान दिया, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया और साथ में खिलाड़ियों को भी बल्लेबाजी करवाई अपने जो साथी थे। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया। और जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव अप्रोच आपका दिखता है, तो फिर परिणाम निश्चित तौर पे आपके हित में आता है। 19 समाप्त, 121 पे 8। पुनीत कुमार 11, 7 गेंदों से। ऋषांत कोहली 45, 39 गेंदों से 6.37 प्रतिशत के हिसाब से। जसमीत नैन का इस्तेमाल इससे पूर्व 1 ओवर 10 रन पर सफलता नहीं मिली जसमीत नैन को। पुनीत 11 पे, ऋषांत कोहली 45 पे। आखिरी ओवर बड़ा करने की कोशिश, तलाश में कुछ बड़े स्ट्रोक। अनासर गनई को सरकाया जा रहा है डीप मिड विकेट पे, क्षमा कीजिएगा, यहाँ डीप थर्ड मैन पे। पहली गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट के खिलाड़ी हैं उस और ये सीधा हाथ में। साजिद डार ने कोई गलती नहीं की, पुनीत को जाना होगा वापस और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई 121 पे यहां विकेट मिला और जसमीत नैन को मिलने वाली यह सफलता तो काफी ऊपर। उस ओवर मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात थे, उनने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ जसमीत को मिलने वाली सफलता। पुनीत का विकेट साजिद डार ने कैच किया और एक और सफलता मिलती हुई। संतुलन बनाए रखा यहां पर खिलाड़ी ने। अच्छी बल्लेबाजी अंत में दूसरे सत्र में 10 के बाद 121 पे 9, 19.1 के बाद जसमीत नैन 1.1 ओवर 10 रन 1 विकेट। इससे पूर्व 1 ओवर रजित शर्मा। अब आखिरी जोड़ी के रूप में ऋषांत कोहली और रजित शर्मा। 6.31 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने। 121, 9 विकेट को है तो कोशिश जरूर आज द रियल सुल्तान समरबुक की सफल हुई है। वो 130 के बिलो रखने का प्रयास जो था, अजय बिल्कुल मैं सहमत हुआ, अच्छा स्कोर है, पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी है हिलवी राजौरी के पास और देखा जाए तो उस प्रकार का प्रदर्शन आज रहा नहीं। 121 ये काफी आगे निकले हैं, स्टंप्स पे थ्रो लगेगा, पारी हो जाएगी। समाप्त 19.2 में 121 पर टीम ऑल आउट। द रियल सुल्तान समरबुक के विरुद्ध हिलवी राजौरी कहानी समाप्त हुई है 121 पे और 122 रन बनाने हैं 20 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस 9वें मुकाबले में अब दूसरी पारी में वो चीज ऑन होगा जब द रियल सुल्तान की टीम बल्लेबाजी करेगी, लेकिन उससे पूर्व यह कहानी 121 तक सीमित रही। 122 जीत के लिए दूसरी पारी प्रारंभ होगी। लौट आएंगे लाइव एक्शन में दूसरी पारी में। दीजिएगा विदा, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।
Assalamu alaikum. Welcome and warm welcome this evening. And it's gonna go a long way into the night. So we can also use. It's nighty night here at Bakshi Stadium. 1-2-2 is what they require. From their allotted 20 overs, Hinan is in the middle and he's got Tajamul Baba, the sixer king from Badgam, and the other batter is going to Hinan. But this music is really irritating, believe me. In the background, and look, our camera team is also feeling that certain amount of pressure at the moment, and they're also pleading that please keep it off for a while. And that vibration is really disturbing. It's 1-2-2 to chase. He'll be Rajouri dispersed out. The two openers very much in the middle. Balwinder Kumar Soni is about to throw it out. Let's play. It's Anuj Kumar to operate with the new ball. He's got the white cherry. Here we go with ball number 1. He has to reload and re-bowl. He's going to go back to the top of his bowling mark as Hinan A is getting ready. He marked the fresh guard. He's getting into an act here. None for none. Anuj with the very first ball. Full toss. Unable to take the chance there. Unable to put it away. It's a dot ball to start with. And can't capitalize. It was a low full toss. But he finds his paras at mid-on. Needed a good shot to start with. It was asking to be hit from Anuj Kumar. Low full toss. Mid on up. Mid off up. Here we go with ball number 2. This time Ariel and Apish. Over backward a point. There is production. Only a single. Hinan wanted second, but Baba isn't looking that way. He's going to face the first one from Anuj Kumar here. He's interested to take a look at how Anuj will bowl on a surface which is slower at times. And look now, there is something in the surface. But Anuj started with a pace straight away. The first one there wasn't enough pace. That was a low full toss. But the second one, as he tried to slash it away, Anuj, he has that ability. Batters need to apply themselves. This is over number 1. Trying to work it away. Scare on the on or the behind scare on the off. We saw from Hinan that flash, that slash in a flash over backward a point. But a good thing to see, Anuj has got a man at backward a point outside the 30 yard. He's got plenty of fielders behind scare on the off. Good shot. Beautiful looking shot. He's going to beat the man. It was a good effort, but unable to stop the ball. And it races away for a first boundary of the chase. Coming off the bat of Hinan there. Beautiful shot. Gorgeous timing. Brilliant. Up to the mark. Pressed it with the soft hands in the end. But there was execution and it was under his eyes. And he admired that shot through mid-off. One more added to the onside fold for Hinan. He's got 1, 2, 3 men on the on, 4 men on the on. There is a Skellig in place and short fine leg for Hinan, and short mid wicket comes into play now. He's got the man at short mid wicket. That one trying to chase it. Unable to get hold of that. Trying to lay bat onto the ball. Throws his bat at it. But there is no connection. Straight away we can see that there is space. But there isn't that much bounce straight away. It will be early to say there isn't going to be any bounce. But the first over looks like that. Bounce is going to be the concern for the two batters. Tajamul Baba, he loves that pace and bounce of the surface. And this is the way to keep yourselves in a mood of scoring runs. You have to keep yourselves in business and look positive. You have to look positive. 7 without loss after the completion of first over. Going up to 122. 7 without loss. 122 to get steady start. They begin their campaign with a steady
start here against the likes of Anuj Kumar. And who will bowl from other end? Looks like the Nirvani. As he's warming up a bit. Is he Nirvani? Is he? Yes, Nazir says it's going to be Nirvani from Northern Pavilion end. The second inning begins from Southern Pavilion end. The second over is coming up from the Northern Pavilion end. Little attendance. JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas. Game number 9 being played between the Real Sultan Sumerbugh and Hillview Rajouri. 7 for none after 1. No, it's Rajat Sharma, not Nirvani. Rajat is warming up. Paras at slip. The way Rishant Kohli played, Hinan is also trying to do that. He's trying to replicate. And Hinan has got loads of experience. The way Rishant batted, that was a great act. That was brilliant performance with the bat. Scoring 40 on a surface which was tough to bat on, but he made it look easy. रजत शर्मा का चयन किया गया है। गेंदबाजी में 7 बने हैं। रियल सुल्तान समरबुग को 122 रन इस मैच को जीतने के लिए तजमुल बाबा और हिनान मलिक से शुरुआत करवाई है बल्लेबाजी में। बात के रजत, अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लाइट देने का प्रयास, पर हिनान और तजमुल बाबा पे दायित्व है कि अच्छा स्टार्ट दें अपनी टीम को, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपने आप में और एक आत्मविश्वास दिखाएं अपनी बल्लेबाजी में। गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं बेहतर तरीके से दोनों बल्लेबाज, हिनान और तजमुल बाबा। द रियल सुल्तान समरबुग दूसरे ओवर में इस समय गेंदबाजी हो रही है। 7 रन 1.3 के बाद रजत शर्मा हिनान मलिक के लिए, और पिछली 3 गेंदों से अभी तक रन आया नहीं है। इस चौथी गेंद पे जाकर के रन मिलेगा और पहला रन इस ओवर में। एक और खाते में 8। हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब के विरुद्ध रियल सुल्तान समरबुग और रजत शर्मा जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, पर यहाँ उनको अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता और एक विकेट की तलाश हिलव्यू राजौरी को पहले ही ओवर से, क्यों पावर प्ले में आपको विकेट चटकाने हैं। फिर जाकर के अब बड़ा स्ट्रोक, यहाँ पे गेंद सीधे वहां पर बाउंड्री से बाहर, बड़ा स्ट्रोक तजमुल बाबा के बल्ले से, पहला छक्का ये बाबा के बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के की सहायता के साथ तजमुल बाबा की व्यक्तिगत रन संख्या 7 और रजत शर्मा के विरुद्ध खूबसूरती के साथ पुल किया और 6 रन अर्जित किए तजमुल बाबा ने। बहुत ही बेहतर बल्लेबाज हैं तजमुल बाबा, और पिछले 1-2 मैचों से अगर हम बात करें तो उस प्रकार से उनका बल्ला चला नहीं है, पर यहाँ आवश्यकता भी है, तो ये समय भी है अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप में वो जो उनकी कला है, वो जो प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं उस कला का इस्तेमाल करना है इस मैच में। फिलहाल 2 के बाद 14, 3 के दूसरे 7 तजमुल बाबा, 9 के दूसरे 7 हिनान मलिक, रिक्वायर्ड रन रेट 6 का, करंट रन रेट 7, अनुज कुमार के पहले ओवर से आए 7 और रजत शर्मा ने भी अपने पहले ओवर में 7 रन खर्चे, तो कुल मिलाकर 14 रन बने हैं हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध 121 के जवाब में। वो जो 122 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए रियल सुल्तान समरबुग को अब तक 2 ओवर में 14 रन बना लिए हैं, पर यह थोड़ा सा संयम बरतना होगा दोनों बल्लेबाजों को और पावर प्ले में विकेट को सुरक्षित रखना जरूरी। द रियल सुल्तान समरबुग को खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ, वहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर, पीछे फील्डर हैं पर नहीं पहुंच पाए, गेंद की गति काफी तेज, फील्डर से चौका मिल जाएगा। यहां पर हिनान मलिक और तजमुल बाबा को 4 रन और जोड़ लिए, वहां पर हल्का सा फंबल जरूर हुआ और 4 रन और खाते में। इस चौके के साथ रन संख्या 18, हिनान मलिक पहुंच गए 11 पे, दौरे अंकों में उनकी व्यक्तिगत रन संख्या। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एक ठोस शुरुआत देने की आवश्यकता है, एक
मजबूत आधारशिला प्रदान करने की आवश्यकता, और वो ज़रूरी भी है सुल्तान वॉरियर्स की। अगर हम बात करें तो रियल सुल्तान समरबुक की बात करें, 5.83 रिक्वायर्ड रन रेट है। ये मानसिकता रहनी चाहिए बल्लेबाज की कि यहाँ ज़्यादा आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। गैप में एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, एक और चौका। 2 गेंदों से 2 चौके अनुज कुमार के विरुद्ध हिनान मलिक द्वारा। दबाव गेंदबाज पे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या कला है इस खिलाड़ी के पास। टैलेंटेड क्रिकेटर हिनान मलिक, अच्छा खासा, जो मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया, अनुभव उनके पास है और उस अनुभव का बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा ऊर्जा का संचार नहीं कर रहे हैं, टेक्निक का इस्तेमाल, उस कला का इस्तेमाल हिनान मलिक द्वारा। 15 पे 11 गेंदों से 22, कुल रन संख्या 2.2 के बाद, और अब 100 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां से। और इस बार फील्डर को भेद नहीं पाया। शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं हिनान मलिक और तजमुल बाबा आक्रामक शैली के बल्लेबाज। यह दोनों बल्लेबाजों को बेहतरीन गेंद की मेरिट के हिसाब से कंडीशंस के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी करनी है, विकेट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है, जो विकेट का स्वभाव है। इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पिछले पांव पे सफल होकर के लेग स्टंप की ओर चले गए थे। अंतिम समय तक गेंद पे नजरें रख रहे हैं। खूबसूरत प्रदर्शन इस बल्लेबाज हिनान मलिक का। 15 पहना बाद 13 गेंदों से तजमुल बाबा 7, 22, 2.4 के बाद। तीसरा ओवर, अनुज कुमार ने अब तक 8 रन खर्चे हैं, 2 चौके उनके बाद, और फिर अगली 2 डॉट गेंदें। अच्छी वापसी की है इस ओवर में अनुज ने। हिनान मलिक सामने, एक बार फिर रन नहीं मिलेगा। पीछे फील्डर हैं तैनात, ऋषांत कोहली। क्या बेहतरीन पारी उन्होंने आज खेली, क्षमता का प्रयोग किया और कला दर्शाई, प्रभावित किया यहाँ पर सभी आए हुए दर्शकों को, स्पोर्ट्स लवर्स को। पारी उनकी बहुत बढ़िया रही आज इस मैच में हिलवी राजौरी के लिए। इस बार बॉलर की दिशा में वापस खेला, बेहतरीन ओवर कटा। 2 ओवर में 15 अनुज कुमार ने खर्चे और 3 ओवर में 22 बगैर नुकसान के। विकेट की तलाश यहां पर हिलवी राजौरी को, पर वो विकेट अभी तक नहीं मिला है। और 3 ओवर में 22 रन, अच्छी रन संख्या 7.33। ये करंट रन रेट बहुत बेहतर है। पावर प्ले में विकेट आप सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित तौर पे ये बेहतर रहेगा आपके लिए। वो कोशिश जरूर अब तक हिनान मलिक और तजमुल बाबा की। 3 में 22, 100 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 17 ओवर की गेंदबाजी अभी शेष, 102 गेंदें, 100 की आवश्यकता, 122 लक्ष्य। 3 gone, 22 with a loss. They're 100 behind exactly. They require 100 is what they're looking forward in remaining 17 overs. 102 balls, 100 to get. Baba finding that one ball, an odd one in other over of Rajat Sharma where he fancied his chances. Oh, that one. Where is this one going? On the bounce into the fence. 4 more runs. Baba gets that one in his territory. Half tracker for Baba like batter. He won that length on offer here. Half tracker, easy pickings. Baba wanted that one to travel all the way. It goes on the bounce for 4. Into double figures. On to 11. 26 for none. Oh, that one. What a connection. Hits the boundary cushion on the full. Gonna be 6. And that is the second 6 of Tajammul Baba this evening. And it's gonna go long into the night, but take a look again. Flat 6. Hits the boundary triangles on the full. On the full. Good call from Ravi Kumar Chaurasia. 6 more. And 10 of 2 balls. As we watch Rajat Sharma again. 1.2. None for 17. This time, little Fuller hitting the right line this time. And Baba makes him wait for that one. And Baba waits for the ball patiently. He's got the scare leg and this
cover point in place. There is a catching cover. Backward a point. It's a good shot again. Flick of the wrist. Runs, 4 of them. A quality shot again up the bat of Tajamal Baba. Little back away. And then look at the work. Look at that angle blade shot. Closes the bat face a little bit and gives it a direction. Helps it on its way. Square on the on. In front of square for 4. This is a big over. And Rajat Sharma. What he has in store. What he's going to do now. This time there was again flight on offer. Anything in his arc. Anything in his zone. He's going to take chances. There was negligible foot movement. But he's using his power to dispatch the ball. 36 for none in 4th over. 21 of 8 balls. That's why the real Sultan Sumerbugh brought this lad into the side. They know if he gets going, then it's hard to stop Tajamal Baba. And this so you can see that 4, 6 and 4. 3 dots, but on the other 3 balls, he has picked up 14. And that's it he needed in this over. And overall first over gone for 7 and second one gone for 14. And look, the economy of 7 in first. The economy all of a sudden gone 14 in the second over. It's doubled in the second over. That means there is going to be double amount of pressure on bowler. And Baba is cashing on at the moment. And they're eyeing this chase in one fashionable manner. They want to finish this game in a good fashion, in a good manner, so that they can improve their net run rate and they will have 2 more points under their belt against their name on the points table. Now Nirvani is given the ball. He's asked to operate. Pressed into service. He want a different setup in the field. He want, in his own way, the fielders in right areas there. As this is the mandatory power play on. 2 overs remaining from power play. 12 balls, important 12 balls. They're going 9 and over at the moment. Nirvani. Some of the quality shots also coming from the bat of Hinan. That too against the likes of Anuj Kumar. Thrice in an over. All via copybook. Proper cricketing shots. Dropping his wrist. Soft hands. Sliced thrice in an over. Through mid-off. All via copybook. All were from cricketing book. It's beaten here. This time gets beaten. But he's playing within the crease. Foot is well grounded. There isn't that much bounce on offer right now. Still keeping low. But the 2 batters are tackling it rightly right now. They're keeping it away. They are not allowing the bowlers to settle down a bit. There isn't too much bounce on offer. But the batters bringing their bat down in time. They're blocking it. 36 for none. But that over from Rajat Sharma, that was expensive, as he was unable to keep things tight. Nirvani has a different action, and the way he's operating at the moment, sometimes close to the stumps, sometimes from edge of the crease, trying to create that sort of an angle, goes fuller at times. And in between, he's taking little pace off in his very first over. Right, look at that one. It was fired onto the middle and leg. Mixing it up. One that was around that 5th stump line. The next one is onto middle and leg. That is going to make huge difference. There is a difference between these 2 lads. Rajat dropped short most of the deliveries. Few of them were flighted ones. But this lad is attacking in a different manner. Totally different from other one. 37 for none. Tajamal is on strike. Just a single of 5 balls. What can he do? Good delivery again. Equally to the task. Tajamal brings it back down in time. 5 gone, 38 without loss.
5 overs done, and Nirvani gone for 2 in his very first over. There was a difference. There was a huge difference between Rajat and Nirvani. Nirvani bowled fuller ones, attacking stumps around off and middle, sometimes middle and leg. And Rajat, he gone short and shorter. Given air and loop to the ball, he beaten Tajamal once because of that negligible foot movement. He didn't move his foot, and that wasn't going anywhere. That was going nowhere. After 538 without loss, now Umar lefty is going to operate the right arm pacer, and he bats with the left hand. Interesting. There are so many guys who bat with the left hand, ball with the right hand. Some of them bowling with the left hand and batting with the right hand. Vice versa. 38 without loss after 5. 6th over, the last of mandatory power play. That good over, tight over from Nirvani to start with. Hinan 16 of 20, Baba 22 of 10. And talking about these two batters, there is also a difference. It's visible, can be seen. One has got the strike rate of more than 200, and the other one is batting with the strike rate below 100. Good shot again. Flow with flourish. Underarm pull comes into play. Baba gets 4 for that. Full marks on a very first ball. He dropped it short again. And easy pickings. Yes, short ball and easy pickings. Anything short? Anything loose? Baba is going to cut loose. Baba is going to break free. So does he. It's over to you. धन्यवाद मनवर। पहले गेंद पर चौका 42, 5.1 छठा ओवर, विकेट लेस अभी तक ये सेशन रहा है अगर शेवर की हम गेंदबाजी करें। अगली गेंद उमर लेफ्टी की, बाबा एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, यहाँ कुछ रन जरूर मिलेंगे, चौका मिल जाएगा। 2 गेंदों से 2 चौके। तजम्मुल बाबा खूबसूरती के साथ प्रहार कर रहे हैं। तेज गेंदबाज उमर लेफ्टी की वजह से उनका चयन किया गया। खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। 4 रन और जोड़ लिए। 2 गेंदों में 8 रन संख्या पहुंच गई है 46 पे 6ठे ओवर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकेट अभी तक नहीं मिला है हिल व्यू राजौरी क्रिकेट क्लब को। 42 से 4 और तो 46 रन संख्या। 5.2 तजम्मुल बाबा 30 मात्र 12 गेंदों से कमाल की बल्लेबाजी। बहुत ही बेहतरीन 250 के स्ट्राइक रेट से वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा है पर ये हवा में है, पर ये स्टैंड में है। 2 चौके के बाद ये छक्का आया इस ओवर में। 4 फिर 4 और उसके बाद फिर छक्का। 14 रन अभी तक इस ओवर से 3 गेंदों से उमर लेफ्टी के विरोध। और 50 भी पूरे होते हैं यहाँ टीम द रियल सुल्तान समरबुग के। और इस प्रकार से 52 रन संख्या पहुंच चुकी है बगैर नुकसान के। और खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक था बॉलर के सर के ऊपर से सीधे सामने स्टैंड्स में। ये तोहफा भेजा है अपने डग आउट में तजम्मुल बाबा ने, जो कि 36 पे है मात्र 13 गेंदों से। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का, 14 रन 3 गेंदों से 52 5.3 122 चाहिए जीत के लिए। अब 70 रन और बनाने हैं इस मुकाबले में। कोशिश यहां पर पहली विकेट की तलाश, बल्लेबाजों का प्रयास वो सफल होता हुआ। और पावर प्ले के भीतर ही 50 से अधिकतम रन बना डाले हैं सुल्तान वारियर समरबुग ने। इस बार थोड़ी तेज गेंद थी, पड़ने के बाद हल्का सा उछाल था जरूर कि शरीर के आसपास लगी है, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। और तजम्मुल बाबा थोड़े से चूके जरूर इस स्ट्रोक से। अब उनकी रेंज में गेंदबाजी करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतना होगा गेंदबाज को।
क्योंकि ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर ज़रा भी विड्थ दें बल्लेबाज तजम्मुल बाबा को तो फिर गेंद को मैदान से बाहर ही ज़रूर जाना होगा। उस शैली के बल्लेबाज हैं, आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करते हैं। ये गैप में गई है पर पीछे फील्डर है, रन मिलेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग, थोड़ी राहत की सांस पिछली 2 गेंदों से उमर लेफ्टी को। चौका चौका फिर छक्का, 2 डॉट, 5 से 14 आखिरी गेंद होगी इस पहले पावर प्ले की। 52 बगैर नुकसान के और 10 के 10 विकेट सुरक्षित यहाँ द रियल सुल्तान समरबुघ के। ये फिर उड़ाया है और गेंद को एक बार फिर स्टैंड्स में पहुंचाया है। स्कोरबोर्ड में 6 लिखवाया है। ये पावर प्ले की आखिरी गेंद, वहां छक्का आता हुआ और 20 रन आए इस ओवर से। 2 छक्के 2 चौके। ये तजम्मुल बाबा का पावर है। ये सामने लाइट्स का बड़ा टावर है, वहां तोहफा भेजा है। बल्लेबाजी बहुत बढ़िया इस मैच में तजम्मुल बाबा द्वारा। आज रंग जरूर दिखाया, वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने का प्रयास था और टॉप एज लगा, हवा में उछली पर 6 जरूर मिले और पीछे ऊर्जा का संचार जरूर था इस मैच में, इस मुकाबले में। और इस स्ट्रोक में 6 समाप्त 58 बगैर नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट 4.57 और 9.67 करंट रन रेट। पहले ओवर में 20 रन आए उमर लेफ्टी के, खासा महंगा ओवर साबित हुआ। बाबा 42 16 गेंदों से, हिनान मलिक 16 20 गेंदों से। आज की शाम तजम्मुल बाबा के नाम रियल सुल्तान समरबुघ के नाम लिख रहे हैं अपने बल्ले से। 6 ओवर में 58, 14 ओवर का खेल, 84 गेंदें और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 64 रन और बनाने हैं। पहले विकेट की तलाश जूझ रहे हैं गेंदबाज वो सफलता के लिए, पर अभी तक वो सफलता अर्जित नहीं हुई है। पवन निर्वाणी ने अपने पहले ओवर में 2 रन अच्छा खासा परेशान किया था बल्लेबाजों को, पर इस ओवर में क्या कुछ कर पाएंगे हिनान मलिक के सामने। पहली गेंद इस बार हिनान मलिक ने खेला जरूर, फील्डर उस ओर जा रहे हैं और पुनीत जब तक गेंद तक पहुंचते फील्ड करते और दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिया। मलिक के खाते में 2 रन, उनकी व्यक्तिगत रन संख्या पहुंच गई 18 पे। अच्छी बल्लेबाजी, वो आत्मविश्वास दिखा, वो संयम दिखा, उस कला का बेहतर प्रयोग दिखा इस मैच में इन 2 बल्लेबाजों द्वारा। और जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत दिलाई है इन 2 बल्लेबाजों ने अपनी टीम द रियल सुल्तान समरबुघ को। एक ठोस आधारशिला प्रदान की है, पर इस बार रन नहीं मिलेगा क्योंकि रामदयाल के पास गेंद गई है। अच्छी बल्लेबाजी, माइंडसेट बल्लेबाज हिनान मलिक का। गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, ठीक गेंद की लाइन में आ रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का खराब स्ट्रोक नहीं खेला है। थोड़ा बैक फुट पे जाकर के स्ट्रोक खेला, पर पीछे फील्डर है, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी, बड़े आत्मविश्वास के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ, एक एक रन से, बड़े स्ट्रोक से इस पारी के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं। वो जो लक्ष्य मिला है 122 का, 61 बने हैं, 61 और बना रहे हैं। आधा सफर तय हो चुका है रन गति की अगर हम बात करें, वो 6.3 में। तजम्मुल बाबा इस बार अंतिम समय पर गेंद को देखा जरूर, खेला जरूर, पर रन के लिए नहीं, कि जानते थे इस ओवर में अभी तक 2 और 1 3 रन आ चुके हैं। एक बार फिर अच्छा ओवर, शिकंजा कसते हैं अपनी गेंदबाजी में। उसमें सफलता भी मिली है पवन निर्वाणी को, क्योंकि 5 ही रन दिए हैं 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। ये बाबा बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, पर नीची भी थी गेंद पड़ने के बाद, हल्का सा कोण बदला, विकेट कीपर ने स्टंप्स भी खेले जरूर, वो बेल्स उड़ाई जरूर, पर कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 61 आखिरी गेंद 7वें ओवर की। बाबा सामने, निर्वाणी गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम गेंद पर सिंगल नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति 7 समाप्त 61 और 2 ओवर में 5 रन। अनुशासन, पैनापन, किफायती कसवी गेंदबाजी पवन निर्वाणी की। एक छोर से रन लगातार उगल रहे हैं बल्लेबाज, तो दूसरे छोर से वो अंकुश लगा रहे हैं और उन्होंने बल्लेबाजों को अवसर दिए नहीं है हाथ खोलने के। फिलहाल 7 के बाद 61।
78 गेंदें 61 रनों की आवश्यकता 10 विकेट हाथ में. 7 done. Tajamal Baba 42. Quick fire knock of 19. Just 19 balls. And he's on to 42. Hinan Malik. He's on to 19 of 23. Two different batters. Their stature, their technique, there is a huge difference. One goes downtown and hitting the ball, using his power, using his own technique in his own yard. He's thrashing the bowlers. And Hinan, he believes in technique, he believes in footwork. And we saw that, some of the cracking shots. "61 without loss after 7 overs. We're going to be now over number 8. As we watch Ankush Bandral. No one in slip cordon. Hinan very watchful at the moment. And Baba has to go. He has to launch. As he launched a couple of big shots today. If he bats with a straight bat, that will help him. Ankush has to put brakes on. His name is Ankush. And in the meantime, there was a flight on offer. That was width on offer. Wide signaled. Anything short, anything wide, he will use his power. His own might is gonna go hard at it. Look, that one is again outside off and left alone. No shot offered. Baba thought it's going to be again a wide. Good move. Keeping it away from his arc. As anything in his zone with flight and offer, he will take chance. Better ploy. That one, look at the power behind the shot. I think wicketkeeper is guiding him a little bit there, telling him that try to keep it slow, wide of the off. Anything around his bat, in his arc, he will make the ball fly. He will try to find that top tier, as he's known for some of the big shots. For a reason, he's given the title King, Sixer King in the Valley. Our team is enjoying, and it's the passion for the game of cricket. Oh, that is a quality from Hinan Malik. Again, the technique is of next level. Superlative. Square cut. And look at that comeback. Getting in position. Look at the adjustment. Look at the adjustment. Oh, wonderful connection. Great shot. And this lad, he's got that class. And it's a classy boundary for Hinan Malik. 24 of 25. Shade below on a ball. Strike rate 68 for none. Ankush is gone for 7. Once again, but there is going to be production. A single is going to content with 69 after 7.5. Singles are coming, 53 behind. Hinan and Tajamal Baba made it look easy. The surface, which was tricky one earlier on in inning number 1. The second inning, there is still that bounce is the question, and that is the concern. But the two batters applied themselves. That one, it is traveling. It's miles into the night sky, and that's gone down to that farther stand away from our count box, and it's traveling miles in air and gone all the way for a maximum. Take a look again. That's gone far away from that grandstand. Oh, that's what I was talking about. I point out earlier on, anything in his zone and there is flight, he will fancy chances. And it landed in his territory and he sent it packing, gives it a direction and shown it away. And that is a huge blow, magnanimous again. 49 of 22. He finds that corner,
to perfection. Take a look again. Oh, what a connection. Lovely. Lovely timing. Aerial he goes. Power behind the hit. When he hits, it stays a hit. And that's it. And sometimes we can say plenty of times, a majority of times, it stays beyond the boundary line. $75 for none. 8 overs done. 72 balls. And they are inching closer. They are heading towards that mark of 122. 75. Again a quality shot. Brilliance of Hinan. And that one is going to beat the fielder again. Pawan Nirvani from Southern Pavilion and is being welcomed with the boundary. 79 for none. A quality shot again. When it comes to that shot, cut shot or the scare cut, look. Oh, classy, pristine beauty, or pristine and the beautiful too. This is Hinan Malik for you. Hinan Malik on your screen, displaying those copybook cricketing shots. All are from cricketing book. 79 for none. This is the opening pair. This is the opening stand and partnership. Hinan playing shots whenever he feels that it's in my zone. He's getting in position. The adjustment is nice. The balance is so fine. And he looks that natural grafter. Now he decided to come down the track. Once again, look. There is catching silly mid-off in place. And he still decided to go at it. And that was an aerial one. It's gone off the turf, roll past and rolls away. Dew is coming into play now. Rohan Cole having a word with Nirvani, and Nirvani is trying to dry up the outer surface. 80 for none. 9th over we are in. Baba just one away from his half century. Baba has to wait for a while. Can't find the gap on offside there. He's inching closer, just one away from his 50. A single here will mean Baba will get there. Is he going to bring up his 50 on this one? 23 balls, 49 for Baba. And this time that's a good shot again. That brings up 50 for Tajamal Baba. It's 81 and look at the raise up the bat. And there is a round of applause. He's going to absorb that and telling Umar Alam that I'm Baba for you. I can do it. Van Rukai 24 balls, 4 sixes and 5 hits. That's where he's best. He's so nice in that zone and talking about the hitting the ball out of the park. Batting with a strike rate of 208. He's master at hitting the ball. Take a look again. 5 hits, 4 boundaries, 5 sixes. All were towering. All were huge and humongous. And one was biggest of the lot that gone into the corner. Finding that corner to perfection. And this over, 6 coming. A boundary and 2 singles. Wide of the field, Rohan is unable to stop the ball. It's hard to bend his back. And he finds it hard. Hinan finds his brace. 10 the 9th over on high. 83 after 9 overs. They're going 9.17 and over. The required rate isn't going to be a big thing. Not just inching closer. And look at the flow. Look at the pace, the energy, and the man in the middle, Tajamal Baba, the way he's trying to energize. He's putting in a lot of effort and he's using the energy to hit the ball. And on the other side, Hinan is going with those sublime tactics and techniques of high level with the perfectivity and finding the boundaries at will when required, with some of the cracking shots, the scare cut, and those beautiful drives through offside. Look, that is punched away
will beat the man. It does. With ease. That's going to give Baba one more boundary. 54 of 25. It's 87 on the board. Look at that. Anything flighted at that height is going to be comfortable for Baba. He's lit up Santa. Brought off his 50. And little attendance here. They're enjoying. At least they're getting their money's worth. They're enjoying. And he's entertaining them. 87 without loss. Trying to launch that one. And that's gone in the gap. That's 4 again. What's going on? And look at the real Sultan Sumerbugh dugout. There is sigh of relief. They're all feeling that peace there. They're enjoying and showing calmness because of Baba. He's there to take the responsibility. Others need to rest. And keeping their side at its best. 91 for none. Wide of the off. Short for caught behind. That's the good way to keep that bat speed and the flow of the bat away. Trying to bowl it wide of the off. Away from his area and zone. That one, it's in the zone. That one is into the night sky. It's going and gone all the way. Onto the rooftop. This is Tajamal Baba for you. What an innings. An inning of high caliber. Look at that shot. Bending his knees and telling me that, oh Munawar, come on, I can bend my knees to perfection. And look at that one. Where it landed. Has it come back? Is it going to come down? Yes, it rolled back onto the field again. It's come down from that rooftop. 97 on the board. 14 of 4 balls here. That one is going to wide of the man at cover down to the wide of mid-off. Look how it changed its direction for a while. And going down to the wide-ish mid-off area. He cuts it up, but none before the 2 batters. Pinch that brace takes Baba to 66 of 29. It's 99 on the board. 23 away. One shot team 100. Look, Baba with a straight bat this time. There is going to be call for 2 again. And they can, yes. He's going to come back for the second. 100 up. 10 done. Halfway mark. 101. Not just the half the job is done. It's 90% done. 60 balls. 21 away. All 10 wickets in kitty. It's a 100-run partnership between Tajamal Baba for the opening pair. For the first wicket. Wow, wonderful. And the opening pair brought up the 100. What a partnership. Sublime, gorgeous, excellent, beautiful. Commitment, courage, committed that we are here to deliver our level best. Bringing up the 100 stand, sharing that 100 stand. A partnership to remember. And when Baba comes back into the form, that's the win-win situation for Umar Alam and rest of the pack. Feroza will be delighted that the Sixer King is finding the meaty part of the blade. That's going to be a good thing in games to come. If he continues with the same form, believe me, that's going to be balle balle for their side, and they're going to enjoy it in games to come, because this is a tournament, this is an event which is full of competition. There is going to be stiff competition ahead, and some of the big games coming up, because you're going to go through that Super 8 stage where one win, you are into the semis. You lose, you have to pack your bags and tighten the seat belt and fly home. And you need to come back next season. Till then you have to wait a long way. Almost a year. So better is, you have an opportunity. Cash on. Make it happen this time round. And he's on to 32 of 30 balls. Hinan Malik. 39 of 3 overs. Rajit Sharma. Economy of 13. And he's lucky. He survives. There is no bounce. Why they're trying to go for that slug sweep? He knows better why he's trying to do that, but it's better to go with a straight bat at times. If there is bounce, you can go with that shot. If there is little bounce, and if it rises, or sometimes the extra bounce can get better of you. They're going to look for the second. We have seen doubles coming, but not this time. 20 needed from 58. Baba 68. Can't get to his 100 here.
If he score next 20 runs, he will finish on 88. So won't get to his 100 here. Can't bring up that 100. But good thing about Baba is that he's back into the form. That's good for Sumerbugh and his club. If he continues to perform like this, that's the important thing. That's what captain require and need from Tajamul Baba. Another good innings. One more highlights from this game. A positive one to take away. He's going to walk away with huge confidence. And for the next game, confidence level will be high and higher. And this time, that was in the zone. He's known for some of the cracking shots, but this time not. Not this time round. Unable to connect. It's Pawan Nirvani, the only bowler who's looked stingy. And talking about miser with the ball. He's been miser. But that one, I think Baba heard me. He heard me right. And sends it packing. Another soaring high into the night sky. One more six. 108 on the board. Baba into the 70s. Take a look again. Nirvani, the only bowler who was effective. But that six is going to disturb his figures to some extent. It landed beyond the boundary line. Couple of yards beyond the boundary line. Nirvani. It was a straighter one in the end. And Baba is there. And look at that bat speed, the bat flow, the ferocity. It's just like that gun barrel hit. Firing on all cylinders here. Brought his bat down in time. It flies and flies. High and high. Huge and wide. 14 to get from 15. 55, sorry, correction. It's 55, not 15. 108, 14 away. The last ball of his spell. The power he generates. Nirvani. And talking about his two hands. He captured that when he stopped with the ball. He knows what speed was behind that shot. It's 11 gone, 9 hours to come, and this will improve their net run rate. If they march all along, going on to win without losing a wicket, that's going to be another positive thing to take away. And they're going to walk away with 2 invaluable points, and that will improve their net run rate. And talking of other side, if we keep Hillview in view, they will have to do a huge work in the coming game. That's going to be a must-win game. And they are left with no other choice. They have to win that, stay alive. The way Sultans were this early in a must-win situation, in a crunch-like situation where they lost the game. It's going to Paras to operate. 14 away from 54 balls. 9 overs. Paras to bowl. Hinan 33 of 32. Shade below on a ball again. This time over backward a point. That's going to give him 4 more. And for the first time, he's scoring shade over around a ball now. Look at that. He's got the 100 plus strike rate. With that 4, they are 10 runs behind. Partnership impressed everyone here. Once again, he was shipping for big shot, but there wasn't pace behind that one. 9 away into the single digits now. Baba on strike. 53 गेंदों से 10 रन चाहिए। द रियल सुल्तान समरबुग, कमाल की बल्लेबाजी, रिकॉर्ड साझेदारी पहले विकेट के लिए इस प्रतियोगिता में अब तक तजमुल बाबा और हिनान मलिक ने निभाई है। द रियल सुल्तान समरबुग के लिए ये कीमती मान रचा है इस मैच में। 113 बिना किसी विकेट के नुकसान के ये बाबा ने फिर उड़ाया है और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया है और डग आउट वहां जरूर है। तोहफा एक बार फिर दिया। 119 11.3 ओवर की गेंदबाजी बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, मात्र 3 रन दूर जीत से 12 ओवर के बीत रहे इस मुकाबले को समाप्त करने का अब सफलतापूर्वक प्रयास, क्योंकि मात्र 3 रन बचे हैं और इस ओवर में अभी भी 2 अथवा 3 के दुकान अब आगे। और डग आउट में सीधे तोहफा था जमुल बाबा का। 80 पे नाबाद 35 गेंदों से क्या पारी के लिए। 51 से 3 119
11.3 ओवर पारस शर्मा ने अब तक 11 रन खर्चे हैं। फिर फुल टॉस और ये गेंद गई है सीमा पार। एक और छक्का, 125 पे पारी हुई समाप्त। 11.4 ओवर में इस मुकाबले को द रियल सुल्तान समरबुग ने जीत लिया है 10 विकेट से। बाबा 86 नाबाद, हिनान मलिक 38। आज की शाम द रियल सुल्तान समरबुग और तजमुल बाबा के नाम यह है जानकारी। 10 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है द रियल सुल्तान समरबुग ने। मैं शेख नज़ीर साथी कमेंटेटर मेरे सहयोगी मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कल नए दिन के साथ आकाश की किरणों के साथ ही आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक दीजिएगा विदा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।